I want to thank the organizers, particularly Dr. Rajput and the Madhya Pradesh Madhya Pradesh Council of Science and Technology and the Vijnana Bharati Malwa Prant for organizing this wonderful Madhya Pradesh Vinyan Sammelan and Expo MPVS 2021 for the last 2 days and tomorrow. And I'm very happy that many eminent people, including the Honorable Chief Minister and many other dignitaries, have participated in this Vinyan Sammelan and Expo to bring out the excellence in our country, particularly in the Madhya Pradesh state, and how to also enhance and look for better opportunity in the future for the betterment of the Madhya Pradesh state. In this regard, as the Vice Chancellor of the VIT Bhopal University, VIT Bhopal is one of the most acclaimed university in the international level and national level. So we are very proud to join this Sammelan and Expo and share our thoughts on industry academia partnership as well as generating the career opportunity. Why this is important today? If you look at our Honorable Prime Minister Ji has been always saying that our economy should become 5 trillion US dollar by the year 2024. If we have to see that we are reaching 5 trillion dollar economy by 2024, at least our economy should grow every year 10 to 12%. If 10 to 12% the economy has to grow means the industry has to perform very well. Our Indian industries have to perform very well. They have to do a lot of export, cut down the import, and also make a lot of products for the Indian society so that we reduce the dependence on the foreign countries. That for that purpose, the industries need excellence in academia partnership, as well as industries have to generate a lot of job opportunity, potential career opportunity for our Indian students, the best brains in the country to join the industry and make it more productive, make it more stronger, so that the industries can contribute to the growth of at least 10 to 12% per year to reach the $5 trillion economy. And that way that this topic has been very aptly chosen by the organizers, how the industry and academia can join together, how they can make a partnership, and how they can provide career opportunity for the young minds of our country to make the industry much more stronger and better. So thanks to the organizers for inviting me to share my thoughts and our VIT Bhopal University thoughts on this important title or topic. So what I'm going to do is that why there is a need for this industry academia partnership, okay, and how that will lead to the career opportunity. There's a need for that. Why we need that. The second thing is what is the current status of this industry academia partnership and what are the career opportunities there. And finally, I will also touch upon how to move forward from now. Suppose I find some gap between the industry academia partnership. Suppose I am finding that the career opportunities are not up to the mark. Then from now, where we can move and how we can move and what are the possibilities. That also I will discuss in the last few slides as the going forward, how to do, what we can do particularly for Madhya Pradesh state as well as for the nation. That is going to be the outline of my lecture today. So before we think and start talk about the industry academia partnership, let us look at today what are the career opportunities. If you look at the opportunity today for the Indian students or the Indian young minds to take a job, the employability is not very high. There is a low employability. The employability is low because there are a lot of skills set that what industry is looking from the young people are missing. The skill set that industry is looking for from the Indian young graduates or the postgraduates or the diploma holders are missing. How to impart this skill set so that employability can be increased? That is what is this particular slide is going to tell you. Since 2010, if you look at the employability of Indian engineers are not changing
beyond the aggregate level. It is stagnant. It is not increasing as it is expected to increase for the young Indian students to get more and more jobs in Indian industries. But everyone will say that there is a lot of potential for the information technology or the software, area where a lot of people are getting job. Really speaking, if you look at the overall percentage, the engineers who are employable at these software companies or software startups are only 3.84%. Okay. And also, if you look at the India's skill report 2021, okay, the overall employability is only at the level of 45.9, roughly 46%. 54% people are not having the employability opportunity because of poor skill set. They don't have that much skill or employability in Indian industries. Particularly if you take polytechnics, which are the heart of the employability or the job opportunity that will provide at the lower level of the engineering industries, where the polytechnics have to impart very good skill set for these young diploma holders. Uh, the employability level is as low as 25%, just only 25%. Overall is 46%. The polytechnic people who are diploma holders have only 25% of them are having employability opportunity. And these diploma holders can move from one industry to another industry without much problem because they are given basic skill set. Okay, a welder can be employed in any industry. They have intergenerational mobility between any industry. Even then, their employability level is very, very low at 25%. This is particularly because the low employability, either in the overall graduation level or at the polytechnic level, it is mainly because the required skill set by industries are missing with the graduates or the diploma holders who are coming. That is one thing. Second thing is that today, if you look at the industries, the businesses are looking for very innovative solutions, not mundane or some routine or very ordinary solution for a problem. They are looking for very innovative and efficient solutions for any problem in the industry, and they are looking for academia to help meet their business needs with such innovative and efficient solutions so that the productivity can be increased at a lower cost with increased efficiency. Okay, at lower cost, industry want to have higher productivity with increased efficiency with innovative solutions. So academia should produce, the young people who can be employed with the skill set that can work for innovative solutions. That is what is the need today that is missing. Another thing is that partnership between the industry and academia. This is very, very important, and that is also required in a very strong way to advance research and knowledge to create a very special skilled workforce. If you want to have very high good skilled workforce, there should be partnership definitely between industry and academia, which is very, very instrumental to take forward, to push research and knowledge such that we can create a very skilled workforce. And industry gains in this way work ready talent, a skilled person with work ready talent with specialist knowledge and practical training. And the universities get benefited by having opportunity to work on relevant technology and challenging problems of the industry as on today. This is very, very important. So industry also gains with excellent work ready talent skill force. The universities also gain by having opportunity to work on the relevant technology and challenging problem of today in the industry. So in this case, both industry and academia, they have to invest in R&D. Okay, industry also should invest in R&D. Academia also should invest in R&D. If they invest in R&D, they can create work-ready talent. They can create opportunity to join together to solve the relevant technologies and challenging problems. So this is very important thing to move forward to have specially skilled workforce for the Indian industry today. The academia should have partnership, and both academia and industry not only have partnership, they have to invest in R&D. This is very, very important point. In addition to look at the government today is bringing out this National Education Policy 2020
which is looking for very tight integration between academia and industry. This is mainly because the National Education Policy 2020 also wants to create a special skilled workforce that is required for the industry. That is how that the skill-based education is one of the most important part of this national education policy. But if you look around other countries, like we can take models from Germany or models from Japan, which are two advanced countries who are very industrially advanced and economically advanced. They offer two very important lessons. What are the lessons? One is that Germany has got an apprentice program. After graduation, after diploma, the students will undergo an apprenticeship program, which is giving all the skill sets that is required for manufacturing prowess. That is, to the skill set is given through during this apprenticeship program after the graduation. Okay, that's very important point. Whereas if you go to Japan, where the students are given the skills with industry requirement during the school system itself. Their school system itself gives matching student skills with industry requirement. Okay, what we need is in between the school and between the apprenticeship, that what is given, we have to look for an intermediate role where India can have a separate system where under the national education policy we should impart a skill set to the students while they are in the school and college together. They should get all this so that they can contribute to the industry academia partnership and growth in the economy. Now, if you look at the society, today what is the public or the society they are looking for? They are looking for homegrown solutions. They are not looking for solution from abroad. They are not looking from global, industries and global countries. They are looking for the Indian solution because the Indian people can understand the situation here. They can understand the difficulties here. They can have a solution that will work, that will sustain for a long time to give the better product. For example, the agriculture system that we have, the water waste we have, the pollution system and the control that we have, for all that, we need homegrown solutions. Homegrown solution only can give better output from agriculture or water purity or the pollution control. Okay, and these specific problems of India cannot be solved by some solution or innovation from the West because their market dynamics is different. Our market dynamics are different. Okay, and second is that our industry has to address the problem of our country with homegrown and specific solution in partnership with academia. That is where that the government or the society or the industry, all of them look forward to the academic institutions to provide solutions, that is homegrown solutions, that will solve specifically the problems in the agriculture, water, pollution, etc. of our country. So all these needs are systematically telling us that there should be very strong, you know, partnership between academia and industry in our country. To add to that, I would further say that you look back our country, centuries back, hundreds of years of back, you look at our history, India has been always a thriving, homegrown research base of centuries. We were excelling in medicine, science, technology, aerospace. You take any area, agriculture, anything that you take, India was a matured country technologically. India had all homegrown solution to solve our own problems and difficulties in the past. And we are well known in the scientific excellence in medicine, architecture, mechanization, which is unparalleled in the world. Our, epics and our history and our literature clearly shows that how excellent we were in the past in science and technology or medicine or agriculture or architecture or mechanization. And that is why that this is still untapped or at times not used by the local industry. So now today we are looking, because of globalization, we want to look for solution from China or Germany or USA or Japan, but we are not looking for the homegrown science and technology, the homegrown talent, or something that is available in our country itself for the benefit of the
industry here. So there is a gap. That means if we are not doing all that, there must be a gap in academia industry partnership. What are these gaps and how these gaps can be bridged? That is what is the essentially we want to know from this lecture. Point one is that academics and industrialists have a different mindset. Therefore, both are living in two different worlds. Academic people think that they are doing different things. Now, academic people think I am doing academics. Industry fellow says my job is different. I am doing something different for the product development or something like that. So they don't think that there is something like a bridge between them. They think that they are, two different entities. And academia is always looking for, excellence in the academics. I mean, they want to do some research. They want to do some good teaching. They want to make their excellence known to their peers. This is how they are doing it. Whereas the industry people, they want to do some product and market it and get some good economy, and then they want to survive on that. Okay, and industry is thinking about short range goals: make the product, sell it, and take the money, and maybe try to produce little more. If they want to go into a chain or a loop where they want to have short range goal of production, marketing, economics, and so on. Whereas academics has a long range perspective. They want to grow academically. They want to have more degrees, more programs, more students, and then more, publications, research, patents. So their aim is going in a different direction, and the industry aim is going in a different direction. So this is the gap that we are finding it. Then there are additionally some more points. What is that? Industry prefers always proven solutions with low risk. If there is an important problem in a particular industry, let me say a power plant that is operating in our country, they immediately look for a foreign solution, something that has been done in abroad. They want to get it, and then immediately they want to go for production. They don't want to take risk of doing some research here, creating some solution, new solution with better innovation, better than that is available abroad. Okay, this is the problem. Industry always prefers proven solutions from foreign countries with low risk, whereas academia is interested in creating new solutions with high innovation rate. They are having the capability. They can create new solution with high innovation rate. Industry is seeking the minimum solution to minimize their risk. Whatever minimum solution, there is a problem, industrial problem. Immediately, hodgepodge, they want to do something and which can work the industry back to power production or the product making with very, very low risk. Whereas academia is looking for very big solution, maximum solution to get better recognition. That academia doesn't tell quick solution. Academia want to do research. Academia want to find out the final problem and maximum solution. Then industry is concerned with cost. Industry is always worried about the cost. They want a solution that is already proven. They want low risk. They want to get it at low cost, and whatever possible solution, minimum solution is enough for them. This is how their mindset is there. And academia doesn't care about the cost. They keep working on getting the best solution. They don't worry about the cost, how that will affect the economy of the industry. But they are only interested in getting the best solution with higher cost also. And what the benefit that they will get out of that, or the prestige that they will get out of that. That is the thing. So that is what I told the first sentence, that industry and academy, they have two different mindset and they are living in two different worlds. They are not working in the same world. Okay, these are the gaps. Now, what are the opportunity now? Knowing all the gap, we were discussing about the need for academia industry partnership, followed by that, what are the gaps today existing also we have seen. Now, what is the opportunity? How this gap can be filled? How this, after understanding the need, how the gaps can be addressed? Okay, that is very important. Now you look at the opportunities. Okay, now looking at this current last 2 year and now, due to the COVID pandemic, the global community is looking is at the end of a fingertip. Okay, so digitization has helped us to get anything that you want immediately. Okay,
immediately you can get anything that is made available. That is an opportunity. Okay. Uh, our Indian industry and academia must and can think big. So when the global community is providing such solutions at fingertip, why not our Indian industry and academia join together and think big to produce something very realizable? Towards this, support from the government is very, very important. I'm very happy that the present government has made initiatives such as Miti Ke Rang, the STI, Science and Technology Initiative hubs of the Department of Science and Technology. They are all focused towards the success of rural communities getting global successes. During the pandemic situation, all the rural people, all the products from the rural areas, they have been combined together, and then they were made as a hub, and that is made better for such rural communities. That was a great success. So such kind of intervention by government and partnership of the government also with the industry and academia is very, very important. That opportunity is existing today with the present government. Other thing is that COVID has also shown that talent need not migrate to larger cities. Okay, because of digitization, wherever you are there, from there you can contribute to anywhere in the world because of the online opportunity. That today I am sitting here in my university and I'm giving this talk. So whatever that we have, the best talent that we can communicate to all our people in the country, all our people in the major cities. So I need not be there to be present at a particular location. There are companies like Joho, Mr. Sridhar, he was awarded Padma Shri by the government of India last year. He has shown the potential that the talent base can be developed from anywhere. He has shifted the entire Joho from America to a small village, rural place in Tamil Nadu. And the company is still surviving and is sustaining and making huge profit. So today it need not be that we have to be in cities, large cities. We can be anywhere there, and you can use the local talent for growing the potential of your industry. And this needs better support also. Definitely that the infrastructure like power, telecom, facilities, all that will be needed in small towns and cities. Okay. And we also need academia in such communities. There is tremendous potential for harnessing this power. Okay. So if we can have the potential of the industry and academia in rural places, there are a lot of opportunities together. They can join together and provide power, provide telecom, provide facilities, growing opportunity for doing business in rural areas by joining hands together. Other important point is, as I have mentioned in the last two slides, digitization. The digitization, which is the mantra of this present government, has given as a God-given opportunity for our Indian community. Many industries can make a hub, digital hub, where vendors can make products and display there, and they can interact with the buyers, and they can do, very ease of doing business with the digital transformation. Okay, that is one important thing as the digitization has provided opportunity to the industries. Similarly, the academia, they can connect to anywhere in the global, anywhere in the rural, so they can get the best knowledge, skill from anywhere in the global, and they can also transmit or offer this skill and knowledge to anybody in any part of this country, rural or any hilly area, where whichever area they are there, you can enhance the R&D and knowledge base of such people. So partnership for Indian industry and academics in this digital world will be definitely an added advantage and easier. The pandemic situation and digitization has given greater opportunity for industry and academia in our country to join hands together. Now, how we can bridge the gap? One is digitization. Another one is alignment of the curriculum with the industry requirement. We need to look at this, whatever curriculum that we have, the curriculum and the system that we have should focus on the requirement of the industry in our country. Then only you can make homegrown solution which you can offer at with minimum cost and low risk to the industry. And you have to go for a skill based education. There should be more and more emphasis on skill based education. The students have to be, provided with multi skill set, so that they can be utilized for any industry with ease, with with a, with low risk and difficulties.
and the workplace exposure through internships, live projects, and corporate interactions. The academic students from academics would have internships, live projects, and corporate interactions. And finally, the faculty who are teaching and imparting knowledge to the younger people, the younger generation, should also be upskilled. Their knowledge also has to be upskilled. Their trade also has to be upskilled. Their business knowledge, the corporate knowledge, the technical knowledge, everything has to be upskilled for the faculty. These are the important points to bridge the gap. In addition to that, there are many societal issues and needs where industry cannot step in due to size of the market. Okay, always industry looks for a bigger size of the market where they can get a better product. Okay, but there are many societal issues where industry doesn't want to come because uh, they don't want to spend more money on R&D. Okay, they don't want to put a step on such mundane societal issues. They want to look at some issue where they can get a big product, profit immediately at that time. Okay, for example, look at the requirement of the mask and sanitizer during the pandemic situation. Okay, initially people thought it is not a big business and nobody was interested in manufacturing the mask or manufacturing the sanitizer. But then the industry woke up, the Indian industry woke up. Today you can see that not only that we are producing all the mask or sanitizer or the vaccine for our own country, we are importing. The government has made it possible that more than 150 countries in the world we have given vaccines, we have exported. They have given all required tools, the mask, the sanitizer, and many instruments that is required. So in the case of societal issues where the industry does not want to invest in R&D, the academia should help. The academia should provide the solution. How to make the sanitizer, how to make the mask with different layers to protect from the virus attack, how to make a biomedical instrument, how to make better quality of vaccine. All that support can be given by academia by doing R&D and supporting the industry, because industry cannot immediately invest so much in R&D and bring out the solutions. And another thing is that the prototype and demonstration by the academia can address important societal needs. Whenever the some laboratory solution is found for some practical problem, there it has to be demonstrated with a prototype by the academia, so that the society and the industry can understand that the academia is capable of making such a prototype and demonstrations of a solution that is required for an industrial problem. Now, the students are very, very important part of this overall ecosystem. Unless you produce a very good student, you may not be able to have good product. If you have very good student with a multi-skill set, then he will be working in the industry. He will make a product at a low cost. He will make the industry to work at higher efficiency, and he will make the industry to take low risk, steps for making higher productivity with better quality and efficiency. So in the ecosystem, students play a very key role. And the academia should help the industry and society by harnessing the student talents. Academia should focus on how to harness the student talents when they are at the educational institution. That should be the focus. There can be so many hackathons and innovation events that will lead to entrepreneurship and homegrown solutions. The students should be motivated to look at the problem of the Indian industry through hackathons and innovation events, and then they should be made as entrepreneurs who can give homegrown solutions to the Indian industry. And finally, the government support is very, very highly in demand for the academia and the student community for making such innovations, which is vital for our Indian industry. So there are so many avenues for the future. So we have seen the need, we have seen the gap, we have seen the possibilities how we can bridge the gap between academia and industry partnership to provide career opportunities for the Indian students. Now, what are the avenues for the future? How things will go in the future? The academia industry interaction should be considered as part of the education. That is where the National Education Policy 2020 says that there should be more and more interface between the academia and industry. There should be a support system which will ensure focused involvement of both academia and industry. There should be some venues where close interaction
from conceptualization to commercialization is possible between Indian industry and academia. Then there can be many events like what we have today. The Madhya Pradesh the Science Sammelan, what we conduct, what we have the expo today, must be organized by all the states throughout the country, not only once in a year. It should be done maybe twice or thrice in a year based on the demand, so that Indian industry people can come and attend, listen to the academy of people like me, and academia people can visit the expo and see the Indian industry participation and understand what are the gaps that what are the solution they require, homegrown solution, and this gap can be reduced. And that way I congratulate the organizers for organizing this fantastic event where the possibility of academia and industry partnership is very much possible. There are many points that I want to also bring out to have avenues for the future. The future is very important. We should have more and more possibility of internships. We should have industry team project. We should have entrepreneurial competitions. We should have knowledge transfer, which should flow, freely flow like water. Industry and government research relationship. The government research, there are many government research institutions are there, more than some 100, 200 are there. And there should be interaction between industry and such government research institutes. Summer camps for the students and teachers, the provision for scale-up operation and entrepreneurial ventures, then finally the consultancy service from the academia side. All these avenues will help the future of the Indian industry. Internship. Internship is nothing where the competition at the completion of an elective coursework program, the graduate students should be allowed to apply for an internship. Okay, so what they do is that they take the sponsorship from the corporate and they go for 3 month internship for a full-time position before they take a full-time position. This 3 month is summer internship when they are studying at educational institution and going to the industry is something like a foot in the door. If they perform very well, they are able to understand the difficulty of the Indian industry and provide some solution quickly through their knowledge base. Then the industry will definitely absorb them, and that is going to be the better step through this internship. Second thing is that industry team project. Everybody should have the real world experience, not the textbook knowledge only, what you are taught in the class and what you understand from a textbook. So at the completion of one's optional coursework, there should be a final industry team project where students are to solve a real world problem in industry. This is something like a sandwich program where the student in the final year can go to industry, identify a problem in the industry and form a team with an industry leader as well as an academic professor. The students should work in conjoint with both the people, the industry leader and the academic professor, and then he should solve a real world problem of the industry. So the industry should sponsor this and they should also help to form the team. That kind of industry team project is a requirement for the future. The third solution I'm talking is entrepreneurial competition. You should, there should be regularly some entrepreneurial competition should be conducted by a corporate sponsor that will allow students to write a business plan, to make competition and potentially turn their plan into a startup company with the help of small grant or funding. If such entrepreneurial competition is made by the corporate support, if students can do this, they can start with the support of such corporate a small startup company which can give homegrown solution for the Indian problem. Transfer of knowledge. The transfer of knowledge is very important. It should be freely flowing between the industry and academic. How that can happen? Industry should hire significant number of students midway of their studies. If the engineering students are studying 4 years, maybe the end of second year or third year, the students should go to the industry and or the faculty should go to the industry and they should be allowed to understand the problem in the industry and give, work on the knowledge that is required for the industry. So the students and faculty should frequently visit the industry and come back to the university in the final year and then discuss the problem of this industry, evolve and then transfer the required knowledge. This would be a very easily workable model because when there is a vacation in after third year of the engineering, the student and faculty can visit some industry nearby and they can understand the difficulties and problems. They can come back and discuss and final year they can take that as a project and give the solution to the industry.
As I told already, that industry and government research, there are many government research, academic research institutions, academic and government research institutions. They should work in an advisory or consulting capacity with a number of industries. Okay, for in some cases, the principal investigator in the government research and academia should hold a position in the technical advisory board of the industry, so that he understands the problem and takes the problem to the required laboratory in the government research institution. And there should be large scale collaborative project between the academic and government research institution and industry to take up the issues. Summer camps. This is very, very important when students are free at summer time, and this is very regularly done in many countries. And they should be, involved in various academic and extracurricular activities. Okay, the students can be taken to some places where special lectures and presentations can be made from the industry professionals. Video shows can be made by the industries, group discussions, debates, and many things by the company. Company should sponsor, and from an engineering institution, they should take some 40 students from each branch, and they take it to their company, and they show everything about their company by videos. Somebody takes classes and lectures. Somebody explains how they make the product. All that is creating a lot of skill set and knowledge to the students. And overall, these camps will provide personality, leadership, organizational skills, and teamwork concept to all the students as they grow. And these camps will provide a platform for professionals to enrich the participants with their first-hand experience in the field and their professional expertise. Then the scale-up operation and entrepreneurial ventures. The most important thing that we were fail in our country is that we do a lot of experiments in the lab scale or the bench scale, but we don't do the scale-up operation where it should be done finally to make products. So students should develop new products and processes which are restricted as bench experiments. Due to non-availability of scale-up processes as a result of capital and operation costs, the research is not able to reach the market. So they make very good research that is proven up to bench scale, but it doesn't go to the scale up like pilot plant and then the production plant. So interaction and informal tie-up with industries and the academia should be there for making products and processes developed in the academic institution laboratories. Consultancy. Finally, there should be a lot of consultancy. There are very good faculties and students with a multi-skill set in the academic institutions. They should help the industry doing consultancy services. This is, so much missing, and this is very, very important, particularly small-scale entrepreneurs who does not have the R&D facility or the quality control facility. This kind of consultancy will help them to make further progress. This will not lead the SMEs, the small and medium micro entrepreneurs, to close their activities because of want of required R&D or quality control in our country. And all of us should know that we have thousands, no, I think more than 12,000 of such SMEs are there in material sector. I know very well in the manufacturing sector. So they need consultancy badly from the academic, and this gap also should be closed. It can be in the form of evaluation of product, processes, software development, many things that can be done by consultancy services to the small scale and medium and micro scale entrepreneurs. And we should have a better ecosystem. The ecosystem should be very innovative, and it should be recognizing the societal research, like giving more recognition to Indian patents and solutions. There are a lot of Indian patents available, but not many industries are buying them and making solution for their problem. This should be done because the patent is the end product of an academic institution that is available with innovative solutions. Second thing is startup ecosystem leading to entrepreneurs. So we need to have more and more entrepreneurs who will have startup systems. The community involvement as an important measure. That is very, very important point. Then encouragement for collaboration and cutting edge solutions in urgent domains such as food, water, pollution. Okay, here there should be more and more collaboration, and there should be more and more innovative solutions for important domains like this. All these points, more recognitions for societal research patterns and solutions, a startup ecosystem leading to entrepreneurs, community involvement as an important measure, and encouragement for collaboration and cutting edge solution to urgent domains.
All that should be there in the NIRF, that's a National Institution Ranking Forum, so that the educational institutions are assessed or qualified by for the rank by NIRF only when they are working on all these points. This is very, very important. So this will help also that many institutions to be classified as center of excellence. If they are able to do the previous slide, whatever I have told, and they get better mark, and that should help them to make as a center of excellence with a specific expertise. You know, there can be many institutions, like maybe you can take IIT Indore. You should tell IIT Indore is a center of excellence. It has got center of excellence in some areas, which you know they are very well known to the industries nearby. And also then industries can invest in such a center of excellence with specific expertise, which is nearby their industry, and they can also fund to start additionally uh, in their domain. They can start a center of excellence in the academic institution. For example, some industry in Indore can come to IIT Indore and they can invest some money. Instead of having their own R&D facility, they can set up a center of excellence in IIT Indore. IIT Indore can provide the space, land, and the required facilities, and the industry can set up a center of excellence. That is one better ecosystem that is possible for joining the industry and academia together. And in this case, that I am very proud and I am happy to tell you that VIT Bhopal has made a lot of initiative to join hands with the industry. We are already having center of excellence, for example, in some areas, like one is secure, which is a center of excellence on cyber security. We have been interfacing with industries, for example, with the Madhya Pradesh State Police Academy or the Central Police Academy or with the Ministry of Home Affairs. We are trying to collaborate and we are trying to interface the requirements. The team Garbit is another one where an electronic car can be made. The automotive electronics are being designed and produced or developed with our support. Then the vernacular architecture, we have started a school of architecture where the conventional architecture can be combined with the AR, VR, MR from the computing science, and we can make a vernacular architecture. So we can combine with some required architectural companies or industries nearby. And most importantly, we have recently started Vidyarthi. We are a knowledge partner. VIT Bhopal is a knowledge partner for Vidyarthi, which is a digital education portal. And this is a digital education is a very, very important business today. And we are very proud to start this in, VIT Bhopal and Vidyarthi. We have joined hands. We are doing this is a center of excellence. So there are lot many world of innovation to offer, and we are looking forward to all the industry in Bhopal and Indore and in Madhya Pradesh to come to us also to make initiative in starting, these kind of similar center of excellences, which can provide innovative homegrown solutions for the difficulties or the problems or issues at the industry in Bhopal, Indore, and Madhya Pradesh with low risk and high efficiency and better quality. Thank you so much. Thank you so much. I have given the possible way, as I have understood how the industry academia partnership or linkage should be there to encourage the science and technology growth and the industrial growth in the state of Madhya Pradesh, and also how that can provide a career opportunity for the young minds, the young students of this particular state. And I want to thank once again the Vijnana Bharati, Malwa Brand, and the Madhya Pradesh Council of Science and Technology, and IIT Indore for organizing this wonderful Madhya Pradesh Vijnan Sammelan and Expo, and inviting me to deliver this particular keynote talk on a very, very important and relevant title, Industry Academia Partnership and Career Opportunity, that is required to our state, Madhya Pradesh, today. Thank you so much for the invitation. Over to the organizers now. Hello. I would like to thank Dr. Kamachi
for his wonderful and enlightening lecture. We will definitely include the points which have been enlisted by you in your lecture in the minutes of our conference. So thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Now we'll start the panel discussion on industry, academia, and career opportunities, as well as career opportunities in Madhya Pradesh. So the next session will start after 10 minutes. Thank you, Dr. Abhishek Rajput, for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Start the panel discussion in 15 minutes.
Okay. So my apologies, my sincere apologies for this. Technical issues. So with that note, I mean, I believe this is a very interesting event as such, this panel discussion, which is primarily focusing on industry, academia, collaborations, as well as the opportunities which lies in Madhya Pradesh. Because the major emphasis of the Chief Minister, as I see that day, was also based on the career opportunities and how to improve the skill in the state, how to utilize the skills that is available in the state, as well as to enhance the skills. So with that regards, we have got a very esteemed panel who will be sharing their views, discussing a lot of points. And of course, our secretary and our team will be noting down all the important points and will be forwarding them to the ministry as well. So with that note, I welcome you all once again. And I would like to now introduce our panel members here today. Dr. Parul Sharda, she is HOD Management section of Indore Management Institute. I welcome her. Dr. Parul, can you please come up to the dais? Dr. Shahina Qureshi, she is the IIC convener and innovation ambassador from Acropolis Institute of Management. Mr. Deepak Bhandari and his team is a CEO and director GFID. He is joining online. Dr. Gunjan Shukla, associate professor and HOD School of Management, Renaissance University. Dr. Rinku Joshi will be joining online. She's the director, Delhi College. Mr. Sachin Chalisgaonkar, the training placement officer, Sri Vaishnav Institute of Management. I welcome you. Mr. Sachin Dubey, placement officer, Sri Vaishnav Institute of Management. Yeah, Shivam Dubey, sorry. Dr. Reena Gupta, HOD, Commerce Division, Indore Management Institute. She'll be joining online. Mr. Prashant Kulkarni, CEO of Chatter Butter, that's a startup. He'll be joining shortly, right? He's on the way, he'll be joining shortly. Dr. Harish Bhatt will be joining online. He's a Dean Faculty of Management and Commerce in the Medicap University. Mrs. Soumya Upadhyay, she's a MD of External Infrastructures Private Limited. I welcome you, ma'am. Dr. Farida from People's Medical College, Bhopal. Welcome you, ma'am. So may I have a round of applause for our panel members? So in today's discussion, we'll be going through. Yeah, that's fine. So in today's panel discussion, we'll be glad to have the views of all our esteemed members on variety of areas, which includes the roadmap of industry academia collaboration, the way forward, adaptation of academic curriculum to meet the industrial challenges. So that's the other point, which is a very profound importance. And then the critical role of industries in enriching academic and research inputs. And finally, the career opportunities in the state of Madhya Pradesh. So thank you all. So I would like to invite the panel members to maybe discuss primarily on the roadmap to industry academia collaboration. So can we start from Dr. Parul Sharda? Good morning, everyone. So to start with the panel discussion today, which is regarding Industry Academia Collaboration and Connect, I am Dr. Parul Sharda, representing Indore Management Institute at this platform, and I would like to put the, put the points that in the academia, the
practical exposure is less, especially in traditional courses. So the practical exposure should be enhanced. Startup culture should be, boosted, so that looking into the increase in population of our country, it is not possible for industries to generate so much of employment opportunities to the students. So job creators are required instead of job seekers. Hence, we must increase the faculties or the mentors in the educational institutes who can instill the uh, mindset into the students to generate and to become the job creators instead of job seekers. And we must divert the mindset of students from only the curriculum based to score good marks only and to get into the merit list to the practical exposure, because in long run we can see that the concepts will be with you, not the theory which you have learnt and mugged up. This was my take for today. Good morning, dear students. This is Dr. Shahina. What I believe that where industry and academia is lacking, I believe that faculties are not going to industry, they are not learning new things. Because we are so much involved in our syllabus, we are not looking after or beyond syllabus. So I believe that a faculty should be sent to an industry to learn so many things. Just like they must have practical exposure. We talk about internship of the students, but we are not talking about the internship of the faculties, because if the faculties are not going directly to the industry, how they will learn and how they transfer that knowledge to our students. So I believe that knowledge transfer is very important. So it is the responsibility of the college to send faculties to the industry every 6 months so that they learn new things from the industry, updated knowledge. Then only they will come to the college and the class and they will teach those things to the students. And I believe that there must be an internship for the faculties too. Thank you. So good afternoon, everyone. I am Sachin Chalisgaonkar from Sri Vaishnav Institute of Management. In my opinion, there is a lot to be done in this particular area in the industry institute collaboration. So first we have to understand the thing. The industry is working on the current problem and the existing problem, which is going to be beneficial for them in the commercial aspects. But industries are not giving the emphasis on the research area. So research in the research area, particularly the institute can do a very lot of good work, right? They can also train the students on the new technologies as well. So the collaboration between the industry and the academia will be very beneficial in the future, right? So to increase this, we have to increase the number of internship. As in new education policy, the internship is mandatory for all the student as well. So first we have to increase the internship for the student, as well as we have to send the faculties to industries and for understanding the processes. And by understanding the processes, they have to teach the students, those who are currently pursuing their graduation or the post-graduation on those particular technologies. So in this way, we can increase the collaboration between institute and the industry. Good morning, everybody. This is Shivam Dubey, currently working as a soft skills trainer and a career coach with Sri Vaishnav Institute of Management. एक बहुत ही सुंदर लाइन है जो कि आप सभी महानुभावों ने अभी यहाँ पे जिस उद्देश्य के तहत बात की कि कहीं ना कहीं गैप है बहुत बड़ा इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में, तो एक शेर मुझे याद आता है कि हर उठा हाथ दुआ का नहीं होता, हर गिरा घूंघट हया का नहीं होता, बुझ जाते हैं चिराग हमारी ही गलतियों से, हर बार कसूर इन हवाओं का नहीं होता। तो एक छोटी सी कहानी है कि जैसा कि अभी मैम ने कहा कि टीचर्स को या जो फैसिलिटेटर्स हैं उन्हें भी अपने आप को अपस्किल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट एनी डाउट देयर इज़ अ स्कोप ऑफ लर्निंग फॉर एवरीबॉडी। तो एक कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी थी। वो बोलती थी कि एक बच्चा था छोटा, वो बहुत गुड़ खाता था, उसकी माँ बहुत परेशान होती, वो गुड़ नहीं छोड़ता। सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, पर गुड़ छोड़ने को वो तैयार नहीं, क्योंकि ज्यादा गुड़ खाने से अति तो सर्वत्र वर्ज्यते, आपने सुना ही होगा, संस्कृत का श्लोक है।
तो उसकी जो माँ थी उसने उसके मामा से, बच्चे के मामा से बात की कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये बच्चा जो है गुड़ छोड़ता नहीं है, क्या किया जाए। तो वो मामा जो है वो गांव के एक फकीर के पास में उस बच्चे को लेकर जाता है, और वो गांव का फकीर जो है वो ऐसे बच्चे के सर पे हाथ रखता है और वो बोलता है ठीक है, तो आज से 7 दिन बाद गुड़ छोड़ देगा। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो क्या है और वो फकीर क्या कर रहा है, ये मैं आपको एज ए लेसन बाद में कोशिश करूंगा बताने की, जो मेरा पर्सपेक्टिव है। पर 7 दिन बाद वो बच्चा अपने आप गुड़ छोड़ देता है। तो वो महिला जो होती है वहां पर, वो महिला बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि आखिर ऐसा क्या किया जो बाकी डॉक्टर्स नहीं कर पाए उस फकीर ने, जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो वहां पर आकर उसने फिर से उस फकीर से पूछा कि मैं इतने डॉक्टर्स के पास घूम के आ गई थी लेकिन गुड़ नहीं छोड़ा था इस बच्चे ने, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ। उस फकीर ने छोटी सी बात बोली कि जब वो बच्चा मेरे पास आया था, अगर तभी मैं उसे काउंसलिंग करता कि बेटा गुड़ छोड़ दे, वो गुड़ नहीं छोड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं भी गुड़ खाता था। और दूसरी बात, जब मैंने उसको बोला आज से 7 दिन बाद तू गुड़ छोड़ देगा, तो उस 7 दिन में पहले मैंने तपस्या की, त्याग किया और गुड़ छोड़ा, और 7वें दिन बच्चे ने अपने आप गुड़ छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर आ गया था, मेरे अंदर वो पेशेंस, वो सत आ गया था, जिससे बच्चे ने मेरे वाणी में सत आने की वजह से पहले मैंने त्याग किया, मैंने कुछ सीखा, उसके बाद सिखाया, तब जाके वो चेंज आया। सो दिस इज व्हाट द पर्सपेक्टिव दैट आई वांट टू ब्रिंग इन this panel discussion, that whenever we talk about industry interface and academic opportunities, what I believe is, again, reach out to the industry. If we reach out consistently to the industries, if we get the best practices from the industries, I believe we will be able to inculcate the same into the students. Our students are perfectly unaware about the glass doors. I hope we all are able to connect with this. They are like, we see the faces here. The institutes like IIT and IIM, they give ample opportunities to the student to visit the industries, to get a part, to become a very familiar part of the industry. But the institutes, those who are like not so much privileged with those opportunities, they should step forward and they should send their faculties, their students, their staff to experience the real world out there. That's what I want to say. Thank you very much. Hi, hello. Am I audible? Good. आवाज आप जगे हुए हैं, इसके भी एक प्रूफ मिल गया. So hi, I am Prashant Kulkarni. I am from Chatter Patter Foods Private Limited, and we run and operate close to 350 food stores across India. करीब हम लोग 12 साल से हैं, और 12 साल में मुझे कई सारे अलग अलग कॉलेजेस में जाके बात करने का मौका मिला है, और आई एम रियली थैंकफुल to this platform. They have invited me, and I'm here to share my views on the current topic. मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी शब्द मैंडेटरी या प्रोसेस आ जाता है, तो वी lack the entire essence of the work that we are trying to do. So whenever we talk about the word mandatory कि internship has to be mandate, या हम उसको mandatory कर देना चाहिए, तो क्या होता है कि हम लोग सभी, मतलब आज मैं भले इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन मैं भी कभी उन्हीं कुर्सियों पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि इंटर्नशिप कैसे होती है. इंटर्नशिप में क्या होता है कि हम किसी कॉलेज में हमें मैंडेटरी कर दिया जाता है कि you have to go and have an internship for 3 months, 45 days, whatever the scenario is. और फिर हम लोग we are trying to जुगाड़, हम लोग ढूंढते हैं ऐसे भाई, ऐसे बड़े भाई, ऐसे कनेक्ट्स, ऐसे फ्रेंड्स जिनकी कोई कंपनी चल रही होती है. What we simply do, हम उनको बोलते हैं मैं तेरे यहाँ पे आऊँगा 1 दिन के लिए, 45 दिन बाद मैं तेरे पास आऊँगा सर्टिफिकेट लेने के लिए. जब हम मैंडेटरी किसी चीज को करेंगे, तब तक ये सारे बैकडोर एंट्रीज हम लोग खुद ही बनाते जा रहे हैं हमारे लिए. जब तक हम उसको पैशन के साथ, या उस बच्चे को या उस स्टूडेंट को हमने एनलाइटन या एम्पावर नहीं करा है कि वो अपने लिए सही डिसीजन ले सके, तब तक आई एम प्रीटी श्योर हम लोग कितनी भी चीजों को प्रोसेस में डाल दें, कितनी भी चीजों को मैंडेटरी कर दें, विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग एनी चेंजेस फॉर दैट मैटर. मैंने कई सारे कॉलेजेस के साथ मिलके कई सारी छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी कराए हैं, जिसके अंदर हम लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते हैं. लेकिन मैं उनके जो डे 1 होता है, तो मेरे पास करीब 100 स्टूडेंट्स अगर हैं, डे 1 पे ही मैं उनको बोल देता हूं कि ऐसे सारे लोग जो सिर्फ मैंडेटरी होने की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं, आप प्लीज चले जाओ, आप लोगों को सर्टिफिकेट हम लोग ऐसे ही दे देंगे. बिकॉज जो बचे हुए लोग हैं, उनमें वो जुनून है, उनमें वो पैशन है, दे स्टिल वांट टू परस्यू whatever we want to implement on them, or impart the knowledge on the topic that we want to impart the knowledge for. लेकिन बाकी सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से या जुगाड़ की वजह से, जो बचे हुए लोग जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है, दे एक्चुअली वांट टू लर्न,
वो भी मिस आउट हो जाते हैं। तो हम लोग भी छोटे छोटे कोर्सेज कई सारे करते हैं जिसके थ्रू हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एक्सपोजर दे सकें। क्योंकि आई विल बी वेरी अपफ्रंट एंड फ्रैंक विथ यू, मैं भी जब बुक्स में पढ़ता था तो मुझे बताया जाता था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेकिन हम जब स्टार्टअप में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गोज आउट ऑफ द विंडो एंड देयर इज एंटायर न्यू कल्चर दैट वी फेस। वहां पे सीईओ पोछा भी लगा रहा होता है और हो सकता है चपरासी कोई सेल्स का पिच कर रहा होता है। देयर इज नो एडमिन डिपार्टमेंट, देयर इज नो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, देयर इज नो पियून, देयर इज नो ये चेक करने वाला, वो चेक करने वाला। हमारे कल्चर, हम हर स्टार्टअप के अंदर कल्चर बहुत ही सिंपल होता है कि बेस्ट मैन फॉर द जॉब, और जो उसके सबसे नजदीक है वो जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करें। लेकिन हम जो बुक्स में पढ़ाते हैं वो ये पढ़ाते हैं। सो आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स। तो बिफोर स्टार्टिंग चैटर पटर आई यूज्ड टू वर्क फॉर इन्फोसिस। अब इन्फोसिस में क्या होता है कि आई वाज अ पार्ट ऑफ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो मुझे अगर एसी का टेम्परेचर भी, फॉर एग्जांपल हम इस रूम में बैठे हैं तो हमें रिमोट तो होता नहीं है एसी का टेम्परेचर कम या ज्यादा करने के लिए, तो आपके पास एक नंबर होता है, आप उस नंबर पे कॉल करते हैं और बोलते हैं एसी का टेम्परेचर कम करो। फॉर एग्जांपल कभी पानी डुल जाता है तो आप हाउसकीपिंग को फोन लगाते हैं, कहते हैं पानी डुल गया है, आके साफ करो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप इट डज नॉट हैपन दिस वे। स्टार्टअप में क्या होता है, जो सबसे नजदीक में है इट बिकम्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। क्योंकि स्टार्टअप के अंदर या कल्चर के अंदर या रियल लाइफ के अंदर जो मुंगेरी लाल के सपने हम लोग बुक्स में देखते हैं और जो धरातल पे या दरवाजे के बाहर आने के बाद की जो लाइफ होती है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट। तो ये इस टाइप का जो इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग इंटरफेस की बात कर रहे हैं या इंटर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन दी एकेडमी एंड दी इंस्टीट्यूट, दिस इज फिनोमिनली वेल। बट जब तक ये मैंडेटरी के ब्रैकेट्स में रहेगी तब तक इसका यूजफुलनेस इतना ज्यादा निकल के नहीं आएगा। जब तक इसको हम लोग एट विल करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि यार ये 100 में से 10 लोग हैं जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, बाकी 90 लोग शायद हो सकता है वो स्टार्टअप के लिए ना बने हो। आई एम नॉट डाउटिंग देम, बट दे आर मेड फॉर समथिंग एल्स। We can obviously provide them the right kind of exposure that they would want, but rather than forcing everybody to get associated with a startup, join a particular startup, I would feel let us give option to the students to choose what's best for them. So this is my take on this. Good afternoon. I'm Soumya Upadhyay from Eternal Infrared Private Limited. In my view, जो आज के टाइम पे एक एस्पेक्ट अपन को टच करना चाहिए, दैट इज लाइक बहुत से मैम ने, सर ने यहाँ पे कहा कि इंटर्नशिप मैंडेट, जैसे आपने कहा मैंडेटरीनेस हटनी चाहिए, ट्रू। बट इसके साथ ही साथ अगर आप स्टार्टअप कल्चर में आना चाहते हो या आप एक जॉब प्रोवाइडर, एक एम्प्लॉयर के अपने इस विजन को डेवलप करना चाहते हो, तो यू मस्ट लर्न द इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स। लाइक आप जिस भी इंडस्ट्री में आगे आपका इंटरेस्ट है, आप उस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टडी द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री. Like for example, if you are like I'm a civil engineer, I would like to quote here the example of civil engineering industry or firm. अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियरिंग फर्म डेवलप करना चाहते हो, तो यू मस्ट लर्न द अदर पार्ट ऑफ द company policies like accounts, marketing, टेंडर, बिड मैनेजमेंट, एवरीथिंग. इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट बनते जाओ. यू हैव टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट. तभी आप एक इंडस्ट्री में एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर पाओगे, आप एक अच्छा नेटवर्क बना पाओगे, आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाओगे उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं आपके साथ टीम आगे बढ़ाने में. Thank you. I think you all have been listening to me for last 1.5 days. And to add on to मैं क्या बोल रही थी 2 दिन, what my perception of 2 days conference is that there is a big lacuna in our educational system that I feel is not fitting in well in developing young minds, training young minds to fit into the right demand and supply scenario. हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स दे देते हैं, हम अथॉरिटेटिवली उनको क्लासेस में बिठा लेते हैं, उनका अटेंडेंस ले लेते हैं, उनको डांट लेते हैं, उनको किसी तरह से एक तरह भयभीत कर देते हैं, एक तरह से डरा देते हैं कि आप ऐसा ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, हमारे हिसाब से आप नहीं आओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू qualify for a certain degree that has become just a paper.
that simple paper which is called a degree in our educational system में एक भयभीत बच्चा आता है, डरा हुआ बच्चा आता है, उसको अपने डिसिप्लिन का ख्याल रहता है, उसको टीचर को नाराज नहीं करना है, तो इस चीज में जो चीज कॉम्प्रोमाइज होती है वो उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। जो मैंने बहुत फर्क देखा इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, यूएस में और इंडिया के एक एवरेज इंस्टीट्यूट्स में, हम उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं दे पाते हैं। And the reason is what I feel is because of the sluggish developmental programs of the faculty themselves. जहाँ जहाँ faculties compromised हैं, आपके बड़े institutes में the faculties have to be on par with the national demands, international scenarios, चाहे वो publications हो, चाहे उनके experiences हो, उनके promotions उस पर based रहते हैं। Whereas अब आप एक इंस्टीट्यूट लेके पूरा स्टेट का तो आंसरेबिलिटी नहीं फिक्स करते हैं, तो अगर आपको किसी से बात करना है, यू ग्रो एज अ टीम। सो इंदौर में एक इंस्टीट्यूट अच्छा है, भोपाल में एक इंस्टीट्यूट अच्छा है, इंदौर हैज एन आईआईटी, भोपाल हैज एन आईसा एंड एम्स, बट वेयर इज इट लीडिंग अस टू? नोवेयर। पूरा स्टेट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट फ्यू टोकन इंस्टीट्यूट्स। जब तक पूरे समाज की सोच नहीं बदलती है, जब समाज के आपके पूरे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो सेकेंड टायर में आती हैं, जब तक इनकी फैकल्टीज को रिगरस ट्रेनिंग, रिगरस इंप्रूवमेंट, कैरियर डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं, जब उनकी प्लेट में कुछ नहीं है, हाउ डू यू सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप? तो वो उस एक्सपोजर, व्हाट आई फेस्ड इन लास्ट 6 months इंटरेक्टिंग विद माय यूनिवर्सिटी टीचर्स, कि उनको वो एक्सपोजर ही नहीं है। तो जब उनका एक्सपोजर कम है, उनकी आंखों ने वो लेवल के इंस्टीट्यूट्स नहीं देखे, वो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देखे, वो चीज़ नहीं देखे, तो वो सेम परसेप्शन नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं जो किसी और ही टाइम के लिए बनी होती है। Teachers are always one generation previous and students are always one generation forward. So both of them are not blending well. We are still inculcating values of some things which are redundant, rudimentary and not wanted in this time of competitiveness. हमें बच्चों को, जो मैंने यूएस के स्टूडेंट्स को हैंडल किया और बाहर के, they are independent, they are confident. The first day I entered and she said, Dr. Faida, when is your class? She was an MBBS first year student and I was taken aback. No, madam, no, sir. And her approach was, you are going to give us the knowledge that we have come for. And after that, you are doing your job and we are doing our job. So it's just like we are on the same platform. वो जो चीज़ हमारे सोसाइटी में नहीं आ रही है, that is not only killing a entire generation, पर हमारी नई जनरेशन सोच ही नहीं पा रही है। वो ये डर के आइडियाज छुपा लेते हैं कि पता नहीं टीचर को पसंद आएगा, will she accept, will he accept, will they promote? आपको हमको खुश नहीं करना है। यू हैव टू पुट इन योर आइडियाज, यू हैव टू पुट इन योर, हमें अपना पर्सपेक्टिव बच्चे को रखने का टाइम देना चाहिए एंड वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड इनफ इन एक्सेप्टिंग इट कि ये हमारा फ्लॉ है। सो लेट अस गाइड द स्टूडेंट टू अनदर पर्सन और अनदर फ्रेम ऑफ वर्किंग एनवायरमेंट जहां वो ग्रो हो सके। वी आर जस्ट मीडिएटर्स। Secondly, being from Madhya Pradesh, I left Madhya Pradesh after my 12th, 30 years before. And when I returned, it looks like the state has been minusculely, very minimum improvement. So whatever I have seen, जो भी सौगात डेवलपमेंट की है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की है, चाहे एम्स हो, आईसर्स हो, रायपुर हो, दैट टाइम छत्तीसगढ़ वाज विद अस, पर स्टेट लेवल में द प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी नेग्लिजिबली सीन। मेरा मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम स्टेट लेवल पे होंगे, पर हमको महसूस नहीं हो रहा, वी आर नॉट एबल टू फील द पल्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो यूनिवर्सिटी लेवल का मुझे लगता है हम लोग और 30 साल पीछे चले गए। वेयर एज अदर स्टेट्स, आई हैव बीन एजुकेटेड इन बैंगलोर, आई हैव इंटरेक्टेड पीपल फ्रॉम वेरी गुड नॉलेज पार्क्स एंड आईटी, आई एम स्टिल करेंटली वर्किंग विद देम। नहीं, कुछ तो हमारे एमपी के स्टूडेंट्स में ऐसा है जो हम उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं इन जनरल दैट दे कम एंड वॉइस। प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है, interactions की बहुत कमी है। There should be a scientific conferences, scientific meetings of the universities, annual board meetings, annual presentations। छोटा ही presentation करेगा बच्चा, उसको stage fear तो हटेगा, वो आज बुरा बोलेगा, कल और अच्छा बोलेगा, but at least he will start respecting his own ideas। बच्चे को platform दो, वो 10 बार गलती करेगा, 11th time, 11th hour, he will definitely be a new person। उसको compulsory faculties should be forced, I would say forced, कि आपको साल में 1 या 2 इंडस्ट्रियल खुद की ट्रेनिंग लेनी है। जो मेरे कलीग्स ने कहा कि हम में खुद में तो ये ताकत हो कि हम गुड़ गिव अप कर सकें, हम चाह रहे हैं हम गुड़ खाते रहें और दूसरा इंसान गिव अप कर दे। दैट डजंट वर्क्स, दैट डजंट वर्क्स। डोंट प्रीच व्हाट यू कैन नॉट फॉलो। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, सारे स्टूडेंट्स वर लिटरली इन टीयर्स कि हमारा तो कुछ नहीं होगा।
मैंने कहा ये तुमने कैसे सोच लिया? You are building your own boundaries, you are living in your own prison, and that prison is your thoughts. आप अपनी सोच के गुलाम हैं. Otherwise, sky is the limit. And I told them, मैंने 6 महीने में only it was self motivation. I made a placement cell, I made a WhatsApp group, I contacted with industries, I made them write to all top Indian national institutes. Compulsorily, मैंने कहा आप लोग सिर्फ अपना summer training के लिए बात करिए. Now all of them used to write five institutes per day. I gave them a homework. रोज 2 institutes को लिखो, 5 scientists को लिखो. लिखते लिखते आज I'm proud to say 2 of my students have been selected for MTech as an internship program, and I'm glad कि उनको national universities में exposure तो मिला. तो कहीं हमारा एक तो thread missing है between faculty and what is required of current faculty. सिर्फ job लेना, class के didactic lectures लेना is absolutely going out of the window. That is digressing to no quality. We have introduced ability skill enhancements, आपके skill development programs, interdisciplinary programs. For biotech industry, we have introduced pharmaceutical courses. आपको पढ़ने तो दो, जब आपको पढ़ने देंगे तो आपकी choices भी बढ़ेंगी. You will be more apt and more tolerable. We have introduced entrepreneurship programs. We have introduced bridging courses. That is the new education policy, and we need to make people who can be answerable for their own destiny and future, not the teachers and the parents. तो अब जितने students को cultivate करना है, हमें ये देखना है job or no job. Job is a very vague term. मैं अगर I'm working as a fashion designer, I'm also employed. So employment, non-employability, job, no job is very, very abstract kind of terms. If you're satisfied with your earnings and your time invested, that should be the first and the last line of fulfillment. और हाँ, इस वक्त MP में जो मैंने देखा है, after walking through all continents and going to all countries, developed as well developing, I think there is a serious lacuna in our education system. And serious word that we are gasping for breath in terms of motivation for students. And it is alarming. अगर अभी हम लोगों ने एकदम measures nahi liye, so I think we will lose an entire generation of young minds in Madhya Pradesh, and that will be a very, very sad story down the line. तो आज करना है, अभी करना है, and we have to see that it is implemented, and the universities must sign a kind of a commitment to the educational system जहां वो ये कहेंगे कि we'll adhere to not giving degrees and papers but cultivating young minds, and we will do these minimum things कि industrial visit, industrial training ये आपके universities की responsibility होना चाहिए, teachers का upliftment होना चाहिए, they should be given better incentives. The more they do it, the better pay scale they get, because incentive के बिना कोई दुनिया में काम नहीं करता. तो you don't work. Let us be that frank. आप बच्चे को भी बोलते हो कि अच्छा अच्छे मार्क्स लाओगे मैथ्स में 5 चॉकलेट देंगे, तो वो it's a give and take process. We need some incentives, we need moral boosting, we need appreciation. मैं 2 दिन आई, I thought I'll go it back yesterday, but the amount of appreciation the faculties and all of them have showered on me, it made me stay this day. तो इतने इस एज में भी मुझे जब ऐसा लगता है, if I'm appreciated, I can pull on one more day. So think about the young people who are looking and craving for these kind of appreciations. हम लोग बहुत over judgmental and critical हो जाते हैं when it comes to students, because maybe our education was difficult, but why make difficult it for other people? And yes, MP lags in industry tremendously. तो जब हमारे पास industry नहीं है, तो हर शख्स का resources नहीं है कि वो घर बार छोड़ के बैंगलोर चला जाए, हैदराबाद चले जाए. So we have a lot of knowledge parks coming up, biotech parks coming up in Hyderabad. So I would say the state government should facilitate our collaborations with them कि minimum 2 faculties जाएंगी, वो 1 महीने की training लेकर आएंगी, and they'll reproduce it and then take a report. So उस student के as and where जहाँ पर है, we can give them what we saw there and then we can take it. So ये एक चीज, yes, it should not have been, it's like I can bring the horse to the water, I cannot make it drink. तो आपको मैं ये चीजें दिखा सकती हूँ. अगर 100 बच्चों में भी 2 बच्चे successful हो गए, I think it's a reward for a lifetime. Because 2 lives, even 1 life is a reward for a teacher. All of us are in teaching professions, so we can understand what it means when that simple word comes as thank you. तो हमारे yes, हमारे efforts में कमी है, हमारे resources में कमी है, platforms में finances बहुत कम है, even if we plan, we cannot sustain. तो finances में कमी है, and I think अगर अभी हम रेस में शामिल नहीं हुए तो बहुत बुरी तरह से पिछड़ जाएंगे. The world is moving at a very fast rate. So we need our students to be determined. It's their life and it's only for their happiness that they have to commit. और सोच समझ के courses लें.
आपका क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का अपनी जगह रिक्वायरमेंट सही है, एकेडमिशियंस का अपनी जगह रिक्वायरमेंट सही है. आपका नेचर जैसे आई वॉज मोर हैप्पी इन एकेडमिक्स इनिशियली, बट अ पार्ट ऑफ मी ऑल्सो लाइक इंडस्ट्री. तो कोई हर्ज नहीं है अगर यू सेल ऑन टू बोट्स. इट्स नॉट नेसेसरली एवरी टाइम यू विल सिंक. ऐसा कहीं नहीं है कि दो नाव में पैर रखा तो डूबेंगे ही डूबेंगे, नहीं. यू मे गो टू अ बेटर डेस्टिनेशन. So you can balance two things. The amount of automation that is coming forward, I thought it was very difficult कि इंडस्ट्री को भी फुल टाइम चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. एक साइड आपकी एक्टिविटीज होना चाहिए. Either if you're an industry, take. And the biggest lacuna that I found in as compared to IITs and other institutes, IITs has opened its doors to many of these private faculties who are excelling in industry to come and visit them. This is not a culture in universities, जिसकी वजह से जब बच्चा सुनता ही नहीं है. Call Kiran Mazumdar-Shaw, let her have a talk for all universities of MP. क्या हर्ज है? All biotech professionals, let it be a convocation, let it be any kind of thing. जब ये लोग आते ही नहीं है, बात करते नहीं है, तो बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं है. जिन्होंने सुना ही नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आता है. We have no pouring in from any of the MP universities of these academias and industry related people. ये लोग हमारे accessibility से, हमारी पहुंच से बहुत बाहर हैं. तो ये जब आएंगे, maybe for a day, maybe online, then I would say that student will get an opportunity to pick and choose. अभी तो हमारा सब ये चल रहा है, हमने थोप दिया, हमने उनके सर पे लाट दिया. You get GPA, CGPA, you get this. You have got a satisfaction in terms of degrees. Whereas skill में एक DNA isolation zero, एक voucher zero. So we are not heading right at this hour. I mean, I think I feel sad to say that. But whatever help I can extend, we can collaborate, we can mutually discuss and plan out. Universities may teaching system need to be overhauled. And that starts from the teacher and the university themselves. Students are at the last ladder of hierarchy. So we have long way to go, but yes, it's at the end of the tunnel, we will see something light, more beautiful. And we hope that MP should be on the first cadre like other states have picked up. Thank you. Very nice initial thoughts given by all the members. But I would like to hear more about, from the students' perspective. We have talked mainly about the academia, the role of academia, the empowerment. The students should be learning more about the multidisciplinary subjects and so on. But what should be the initiatives be taken by the industry side? Because we are talking about roadmap to industry academia collaborations. So the discussion which I heard was mainly revolving about the academia part. So going further, what should be the initiatives regarding the industry? So I would like to, invite views on that. What step should industry take for academia? I think industry faces a lot of problems, right? Sir is here. Industry faces a lot of problems. So if you have some problem statement, please give this to students. Please come to academics and give this to colleges, universities, and definitely they are young mind. They will definitely come up with new solutions because students, I believe that students are the innovators. They come up with the solution we are not thinking about. We may be thinking about the Akbar ka zamana, but they are thinking about, they are living with Ranbir Kapoor or any other new celebrities you say. They are the new innovators. If you give some problem statement to them, if industry are directly coming to the college and university, then definitely new solutions to the problem, different perspective to the problem would definitely come, I believe. थैंक यू मैम. मैं कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल इन माय इंस्टीट्यूट इन्फोसिस ने एक एफडीपी प्रोग्राम कंडक्ट किया था. सो एफडीपी वो किस लिए कंडक्ट किया था? बिकॉज इन्फोसिस का जो पर्टिकुलर बीपीओ सेक्टर है, सो दे वर फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन मेन पावर की काफी कमी भी है एंड उनको टैलेंटेड मेन पावर भी नहीं मिल रहा था, राइट? सो दे डिसाइडेड टू ट्रेन द फैकल्टीज. तो हमारे इंस्टीट्यूट में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था इन्फोसिस का, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. जैसे इन्फोसिस ने किया है वैसे अदर इंडस्ट्रीज को भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे वो फैकल्टी को ट्रेन करें एंड फैकल्टी स्टूडेंट्स को ट्रेन करें. सो इन दिस वे इंडस्ट्री कैन टेक द इनिशिएटिव्स. मैं तो फर्म बिलीवर हूं कि जो आइडियाज आप लोग दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता. इसका बेस ही शुरुआत यहाँ से होती है कि हमारा जो टैगलाइन है वो भी मुझे स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ है.
तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, IIPS से मैंने ग्रेजुएशन करा था, वहाँ पे एक इवेंट होता है यूरिस्को करके, स्पंदन, नहीं मैं नाम भूल गया, शायद कुछ नाम होगा। तो वो जो इवेंट होता है उसके अंदर आई वाज कॉल्ड टू स्पॉन्सर वन ऑफ द टीम्स। और वो लोग जब तो उस इवेंट में क्या होता है कि बच्चों को पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में रैली करनी होती है एक तरीके की, और उस रैली में अपने अपने जो स्पॉन्सरर्स होते हैं उनके नाम को आपको शाउट आउट करना रहता है कि थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए टाइप्स। तो वहीं से मेरे ब्रांड का टैगलाइन मुझे वहीं से मिला, एंड इट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द चीपेस्ट टैगलाइन पॉसिबल, क्योंकि उसमें मुझे कुछ खर्चा ही नहीं करना पड़ा। मेरे ब्रांड का नाम है चटर पटर, उन्होंने टैगलाइन दिया खोले मुंह का शटर। तो वो जो पूरे रास्ते चिल्ला रहे थे, वो चिल्ला रहे थे चटर पटर खोले मुंह का शटर। और उन्होंने मुझे उसका वीडियो क्लिप जब भेजा तो मैंने सोचा मुझे टैगलाइन मिल गई। आई इमीडिएटली गॉट इट रजिस्टर्ड एंड दैट्स हाउ आई गॉट द आइडिया। तो आई फर्मली बिलीव कि जो मैडम ने बोला, जो कि हम अगर प्रॉब्लम्स लेके अगर स्टूडेंट्स के पास जाएंगे तो दे वुड डेफिनेटली कम अप विद द सॉल्यूशन। लेकिन इसमें जो एक मिसिंग लिंक है वो है वो प्लेटफॉर्म, कि मैं मेरी प्रॉब्लम्स रखूं कहां और आप लोग आपका सॉल्यूशंस रखेंगे कहां। तो चटर पटर के ऊपर हार्वर्ड ने केस स्टडी पब्लिश करी है, प्रिंसटन में पढ़ाई जा रही है, येल में पढ़ाई जा रही है। अब इसमें मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट रख दिया है, मेरे सॉल्यूशंस मैंने रख दिए हैं, लेकिन ये हुआ था 2018 में, ठीक है। अब 2018 से 2021 आ गया है, मेरे नए प्रॉब्लम्स आ गए हैं। आई डोंट नो वेयर टू कीप माई न्यू प्रॉब्लम्स एंड यू गाइज डोंट नो वेयर टू पुट न्यू सॉल्यूशंस। तो एक प्लेटफॉर्म, हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है और हम बात कर रहे हैं यार हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म ही तो मिसिंग है। अब जमाने के नौकरी.com आ जाएं, जमाने के इंडीड आ जाएं, लेकिन फिर भी जो FDP प्रोग्राम कर सकता है या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के थ्रू हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट के साथ, मेरा एज एन इंडस्ट्री का जो इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत ही मिनिस्कल है, बहुत ही लिमिटेड हो रहा है। वो शायद होता है जब गवर्नमेंट बोलती है स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप वीक चलाना है, तो 7 दिन का या 15 दिन का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर बातें होती हैं। अगर आप किसी भी पौधे को साल भर में 10 दिन 15 दिन पानी डालोगे तो पौधा पनपेगा तो कभी भी नहीं। लेकिन ये हर साल ही हो रहा है, हर साल हम 15 दिन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप वीक सेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर हम लोग हर हर साल नए पौधे लाते हैं, उसके अंदर हम लोग पानी डालते हैं, हम कहते हैं कि हमने ये वाला। तो मैं थोड़ा सा रफ बोलता हूं, मैं शायद सभी फैकल्टीज हैं, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल जॉब, आई एम नॉट डाउटिंग देयर स्टफ एज वेल, बट मैं मेरी प्रॉब्लम्स रखने का ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही प्रॉब्लम्स को रखने का है। तो हम लोग साल में एक बार पौधों में पानी डालते हैं, कहते हैं कि हम इस कॉलेज से कई सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, लेकिन डू यू रियली थिंक ऐसा होने वाला है? हम लोग साल में एक बार बिजनेस कंपटीशन रखते हैं, उसमें से एक जज एक टीम को जिताते हैं और कहते हैं कि यार ये बंदा स्टार्टअप करेगा। जब हम 2 साल बाद उस बंदे से मिल रहे हैं तो शायद वो रेज्यूम लेके भटक रहा होता है कहीं जॉब के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उस बिजनेस प्लान बनाने के बाद आगे करना क्या है। हो सकता है कोई फूड के अंदर बहुत ही जबरदस्त आइडिया लेके आए, हो सकता है वो मेरे पास डायरेक्ट कनेक्ट करे और मैं उसको बोलूं यार ठीक है यार ये 10 चीजें हैं जो तू गलत कर सकता है भाई, तू सीधे मेरे पास आ, मैं तेरे को ये 10 चीजें ठीक करके दे देता हूं। लेकिन हम लोग कनेक्ट कैसे करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीजों का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ इंटरेक्शन है, रेगुलर इंटरेक्शन है, सिर्फ साल में एक बार 15 दिन के लिए होने से काम नहीं। ये चित्रहार की तरह या साल में एक बार आमिर खान की मूवी की तरह हम देखेंगे तो हम भूल जाएंगे, हम अक्षय कुमार बनना पड़ेगा, साल में 4-6 बार पिक्चर लॉन्च करनी पड़ेंगी। तो this is what I feel is missing link. Here I am also thinking that as you have mentioned about the platform, right? It is very important if you'll see at the college level. So where is the platform in our colleges? That is called the training and placement cell. You know, in terms of employment, definitely, I'm not talking about the knowledge generation and learning, but in terms of employment, every college is, I think, having the training and placement cell. So basically, that is one place where the companies can interact and the students can register, and according to their I would say skills as well as their dreams, they can have the platform. So if you'll see in terms of Madhya Pradesh, we are having lots of industries around Indore, Gwalior, right? Lots of industries. But what about the employment? Industries are struggling or lacking for skilled persons, right? And I came to know recently from the government as well as from some software companies who are staying here in Indore itself, that they are not getting the skilled person in Madhya Pradesh. So basically, what can I see is
that is called Diya Tale Andhera, right? So, I mean, you see, Indore is an education hub, right? And apart from that, we are talking about the students who are registered in a good school, universities, colleges, and so on, right? But what I believe is there are another part where students are not able to register in the university, even after 8th or 10th, even some is up to 5th, right? But they are having some skill. As you are running your food chain, you can just um, introspect and please tell me how many workers, whether it is from hospitality, the food making, and so on. So how many are there? They are really very highly educated, but I think your business is extremely dependent on them. And in every 6 months, 7 months, or a year, you might struggle with the skilled labor, right? That कोई एक बहुत अच्छा कुक है, वो अभी छोड़ के चला गया, राइट? अभी उसकी फैन फॉलोइंग थी उस एरिया में जहाँ पे भी आपकी चेन चल रही है, फिर वो एक शिफ्ट हो जाएगा तो आपकी इंडस्ट्रीज को वहाँ पे ये लॉस होगा. सो व्हेन इट कम्स टू द कॉमन प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर gathered here, and idea should come. So what I believe is we should have centralized career development center for Madhya Pradesh, where the leading industrialist academicians can connect. For example, I'm heading training and placement in IIT Indore. So we are interacting with lots of companies, right? And a very nice placement is going on. Even I'm very happy to share that now we are not having the students. 10 companies gone with 0, right? Still, they are line up and the students are not applying. So what I believe is there is a employment. Only thing, the right platform, connecting links, and the awareness among the students. So if if it may be possible for the government that they can create a center for Madhya Pradesh, right, where lots of companies can register right from the uneducated to the educated people, where all the industries can register, where all the participants can register, and we can give them a very nice platform, and certainly that will be helpful to generate employment for Madhya Pradesh, and subsequently it will definitely contribute to develop our Madhya Pradesh. As I said, or the theme of our conference is Viksit Pradesh and Atmanirbhar Pradesh. So that is from my side, because our conference is also including career opportunities, right? So that is from my side. थैंक यू वेरी मच सर. सर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि एक सजेस्टिव मोड में हम आ पाए इंडस्ट्री के लिए, रोड मैप के बारे में अगर हम बात करें, तो कई बार ये तो देखा गया है कि इंडस्ट्री कंप्लेन कर रही है एकेडमिक से या इंस्टीट्यूशन लेवल पे, यार हमें स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा, पर वो अपने विजन के अंदर वो कहाँ इंक्लूड कर रही है कि उसने एकेडमिक्स को क्या कंट्रीब्यूशन दिया उसको क्रिएट करने के लिए. Exactly. है ना? उसके लिए इंडस्ट्रीज अगर चाहें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मैं स्पेशली मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जैसा कि मैम ने बोला कि वो अलग अलग जगहों पर रही है, उन्होंने डिफरेंस फील किया है, बैंगलोर, मुंबई, पुणे. यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है सर, वो धीरे धीरे अर्बन हो रहा है. वो एकदम से आप बोलेंगे ना रातों रात जो है वो उजाला नहीं हो जाएगा. तो रातों रात अगर उजाला कोई करना चाहता है और वो चाहता है कि स्किल्ड मैन पावर आए, यहाँ से निकले, तो सर एक डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर का मेरा आइडिया है, जो कि हर इंडस्ट्री अपने यहाँ पे भले 2 लोगों को असाइन करे, पर वो डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर अगर एकेडमिक से कोई ऐसे हाथ देने के लिए खड़ा हुआ है, तो वहां से डीएसडब्ल्यू को वो कनेक्ट करें कि ठीक है हम आपके लिए वॉलंटियर करेंगे, आप बताइए आपकी समस्याएं क्या है. सो मुझे लगता है बहुत सारा समाधान उस लेवल पे धीरे धीरे आने लग जाएगा. हमारे यहाँ मैं बता रहा चाहता हूँ आपको कि अभी 15 बच्चे हमने पिछले 3 दिनों में डेलॉइट में हमारे सिलेक्ट हुए हैं. उन 15 बच्चों की एक छोटी सी कहानी रही. उसके अंदर डेलॉइट ने स्मार्टेस्ट को सिलेक्ट नहीं किया, डेलॉइट ने ऑनेस्ट को सिलेक्ट किया.
तो वो ऑनेस्ट, ठीक है, वो उनका क्राइटेरिया था कि उन्होंने ऑनेस्ट को सिलेक्ट किया, स्मार्टेस्ट को सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन बाकी कंपनीज को जो मैं मध्य प्रदेश के लेवल पे जब देखता हूँ, वो हमारे यहाँ पे फिल्टर लगाने आती हैं। समझ रहे हैं आप बात को? फिल्टर लगाने आती हैं। जैसा कि हमको लगता है कि यार हमारे कुछ बेचारे स्टूडेंट अलग हो गए और जो बस 2-3 जो एक क्राउड में क्रीम लेयर आई थी उनको लेकर चले गए, और हमारे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं आती। कंपनी ने एचआर से बात हुई हमारी, सर, और हमारी बात होती है एचआर से, सर क्या प्रॉब्लम थी? बस सर ये 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सर क्या प्रॉब्लम थी? कोई फीडबैक नहीं है हमारे पास में। तो कुछ कंपनीज बेस्ट प्रैक्टिस करती भी हैं, जैसे जेंटेक का अभी हमारे यहाँ पे ड्राइव हुआ था, तो उन्होंने पूरा शीट शेयर किया हमारे साथ में। सो आई थिंक इट इज एडवाइजेबल फॉर द इंडस्ट्री, पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर सेल इन देयर डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड, एंड सेकंड इज मैंडेटरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो उससे हमको भी तो गैप्स पता चलेंगी सर, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में इतना घुस नहीं सकते हम। हम IIT इंदौर में आई थिंक वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट थिंग, एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमारे 100% प्लेसमेंट हो गए, अभी बच्चे नहीं है। No, so I think that should be the responsibility of placement cell while dealing with the company. Initially, you should mention each and every policy of your institute right before, so they cannot deviate. If they will deviate, you can withdraw your students. That's it. That makes sense, but what I'm trying to say is if they develop this culture in themselves कि हमें feedback देना ही देना है सभी स्टूडेंट्स का, और फिल्टरिंग सिस्टम में आएंगे, आप इंटरव्यू करेंगे इंडस्ट्री में से, 2-3 राउंड्स होते हैं, वही ट्रेडिशनल राउंड्स ऑफ That's what I'm saying. They are giving. नहीं, माइट भी आपके केस में दे रहे हो फीडबैक, बट हमको इतना मेजरली सर आई थिंक सो फीडबैक। I'll tell you, before Sir, there is a 3 years, difference. there was not a culture to take feedback, and we have started. So it took 1-2 year. Now it is full-fledged. So I as mean, you if you'll mentioned, share it will some, happen some slowly. form, some Google form, Can I make add it easy. Make it easy. It should take only 30 seconds to them. They will give. If you'll give, a big form and all those things, they will not give. Can I add you something? can Yeah. frame the questions, and you can put them these things initially, and ask them to give you their 30 seconds to you. That's it. लाइक जैसे कि अभी सर ने बताया कि डिलाइट आई 3 बच्चों को लेके गई, 15 बच्चों को लेके गई, एक जो एक ऑनेस्ट बच्चे थे। सर व्हाट अबाउट जो एक स्टार्टअप्स अगर आपके यहाँ रिक्रूट करने आती है, तो उसके लिए आप आप बच्चों को क्या कल्चर देते हैं उस चीज़ के लिए? लाइक डेलॉयट ब्रांड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बट अगर कोई स्टार्टअप जैसे कि माय ऑर्गेनाइजेशन इज 7 ईयर ओल्ड, आई थिंक योर्स इज 12, अगर इस टाइप की आती है जिसका बहुत ब्रांड नेम नहीं है इंडस्ट्री में, तो देन हाउ आर यू मोटिवेटिंग देम टू बी अ पार्ट ऑफ ए स्टार्टअप ऑफ दिस, और मतलब पार्ट ऑफ दिस स्टार्टअप और थिंग? क्योंकि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन माय इंडस्ट्री कि मैं रिक्रूट करती हूँ थ्रू इंटर्नशिप प्रोग्राम ओनली. आई अप्रोचेस मैनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर. They came, they just learn in the 3 months and then just waved off. Because भले अब आज वो मार्केट में साल भर से खाली बैठे हैं, बट मैंने उनको इंटर्नशिप प्लेसमेंट ऑफर दिया है, बट सिंस आई डोंट हैव दैट ब्रांड नेम, तो बच्चों के दिमाग में वो जो 2-4 अच्छी कंपनियां हैं जिनमें उनके 2-4 फ्रेंड प्लेस्ड हो गए हैं, उसके नीचे कुछ सोचने की क्षमता ही नहीं बची है. दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन यू कैन से इन एनी इंडस्ट्री जो छोटे लेवल पे भी चल रही है. और हमें अच्छे काम करने वाले, अच्छे टीम बनाने वाले, एग्जैक्टली मैं टीम मेंबर बोलती हूँ सबको, बिकॉज आई एम इन ए ग्रोइंग फेज. मैं हर साल इंटर्न्स लेती हूँ. मेरी कंपनी में हमेशा मिनिमम 3 इंटर्न्स होते हैं जो हमेशा एक नया डोमेन, एक नया सेगमेंट इंजीनियरिंग का डेवलप करते हैं. आई जस्ट ट्राई देम कि तुम इसको लीड करो अगले 5 साल, एंड डेवलप करते हैं. नेक्स्ट मैं दूसरा सेगमेंट डेवलप करती हूँ. बट द सेम प्रॉब्लम ये जो बच्चों के दिमाग में ये जो चीज रहती है, तो आई वुड सजेस्ट इन दैट कि कैन वी हैव अ वन जॉइंट मेंटरशिप प्रोग्राम इन दैट. लाइक अगर कहीं से स्टूडेंट्स मेरी कंपनी में आए हैं या किसी भी स्टार्टअप या स्मॉल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो शैल वी हैव कनेक्शन विद टीचर्स ऑल्सो 1-to-1 कि बच्चा यहाँ सीख रहा है, वी आर फीलिंग कि ये सस्टेन करेगा मेरी कंपनी में, बट सडनली वी फाउंड कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड.
he just moved out. उसका क्या रीजन है, दैट्स वी आर नॉट गेटिंग. तो अगर हम ये चीज टीचरों के थ्रू कि उनकी क्या साइकोलॉजी चल रही है, व्हाई दे आर नॉट वांट टू रिटेन विथ अस, इस तरीके की टू वे कन्वर्सेशन अगर कंटिन्यू हो तो दैट माइट बी good option for industry to make Indore or MP is a good employable station for any domain, I guess. Anyone want to add something? सो ऐसा लग रहा था कि मैं ही बोल रहा हूँ. इट वाज दैट मतलब कॉमन हम चीज. इसमें सिर्फ मैं एक लाइन ऐड करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वाइल ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स हमको एक चीज और बोलनी चाहिए कि योर डिग्री विल नॉट फेच यू गुड रेवेन्यू और गुड सैलरीज बट योर स्किल्स वुड. तो कई सारे इंटरव्यूज फ्रेशर जो हमारे पास आते हैं दे वुड से आई हैव डन एमबीए तो आई डिजर्व दिस अमाउंट. हो सकता है वो साल 2 साल से मतलब उनके अगर आप स्टेटस देखेंगे या लिंक्डइन पे देखेंगे तो दे आर स्टिल लुकिंग फॉर जॉब्स. वो 2 साल से खाली बैठे होंगे लेकिन वो दे डोंट वांट टू डेवलप द स्किल्स. वो ऐसा नहीं कि एक दिमाग में सेट कर लिया है कि आई वुड वांट टू गेट प्लेस एट एक्स अमाउंट ओनली. तो वो एक्स माइनस कुछ भी होता है दे आर नॉट एग्रीइंग फॉर दैट. तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक ऐड मैं एक ही लाइन बोलना चाह रहा था. मैम इसके लिए जैसा आपने अभी बोला कि आप क्या कर रहे हैं एज एन एकेडमिक, आई मीन आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, सो मैं तो बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही बात बोलता हूँ कि बेटा डिग्री से तो खास कुछ फायदा होने वाला है नहीं, है ना. रिज्यूमे को आपको जब इंटरव्यू किया जाएगा तो आपके एकेडमिक्स के लिए इतना सा कॉलम होता है और स्किल्स के लिए इतना बड़ा कॉलम होता है. तो उसमें हम जब ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को तो हम शुरू ही यहाँ से करते हैं. पर अब यहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम आ जाता है एक कि अगला जो लेक्चर है स्टूडेंट का वहाँ पे वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पढ़ने जा रहा है और यहाँ मैं स्किल डेवलपमेंट के सेशन में उससे पूछ के जा रहा हूँ बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म इंश्योरेंस एंड क्या बोलते हैं दूसरा जो होता है यूलिप प्लान. यूलिप प्लान में क्या डिफरेंस है बच्चे को पता नहीं है. सो फैकल्टी अगर बेसिक नॉलेज पहले देंगी उनको, मार्केट से जितना ओरिएंटेशन फैकल्टीज का होगा, पर फैकल्टी अगर सुबह इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगी तब वो पॉसिबल है. Yes. अदरवाइज वो है नहीं पॉसिबल. This brings down to our another point जो एक अलग बिंदु है वापस कि academic curriculum to meet the industrial challenges. That is also very important point. I think you have earlier mentioned elaborated on that. Right, if you have to share something more on this. I would. Like what we are facing is a bridging problem between industry and academia. So when I was back placed in US, all of you have been there and we are exposed to different stories and success stories and inventions. But unfortunately, वो सब US तक लिमिटेड रहती है. पर एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी जो अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ ये था कि मोर वुमेन एम्प्लॉयमेंट अगर आप दे बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ. The government kept on saying increase women in your organization, private or public, whatever it was. So then they thought that it was not being accepted generally by either sector because they need to show their productivity. So they would eventually, अगर कुछ paperwork में ladies को women force को show भी किया, they would hide it under the cover. Then what intelligent step the government started taking was कि let us give the industry an incentive. आपका नॉर्मल इंडस्ट्री को 10% रिबेट मिलता है जिनमें मोर देन 30 और 40% वुमेन वर्कफोर्स होगी, उनको 20% रिबेट मिलेगा. तो अगर हम यहाँ इंडस्ट्रीज को रोपन करते हैं कि आप एमपी के कुछ कॉलेजेस को अडॉप्ट करके इनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करें तो आपको इंडस्ट्रीज को इतनी हेल्प मिलेगी और वी वुड गिव देम सम रिलैक्सेशन. सेकेंडली यू कैन साइन अ बॉन्ड विद द स्टूडेंट की जो हमारा फर्स्ट लेवल क्लियर किया है, सेकेंड लेवल में Just to intervene, if you can elaborate on that for the benefit of the students, how yes. can that be achieved? How this can be achieved is, जैसे मैंने अभी for the talk and for the conference I was looking through broad pharma industry. So मैंने एक institute में काम किया which was run by Pfizer and Genomic Novartis Foundation. तो अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं, funds उनके आते हैं पर हमारा bond रहता है. तो अगर इनिशियली वो ट्रेनिंग करेंगे तो इंडस्ट्रीज को मे बी दे गेट अ टैक्स रिजेम्पशन और दे गेट समथिंग एट अ लोअर प्राइस. नाउ लेट देम कम एंड एस्टैब्लिश. एकदम सिरे से ब्लैंड लैंड में खड़ा करना कोई चीज पॉसिबल नहीं है. तो बेस्ट रहता है इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है, जो व्हाट पीपल हैव बीन आस्किंग, कम टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. आप एक फ्लोर ले लीजिए, टेक सम फ्लोर और बिल्डिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, वहां आप अप टू डेट रिसर्च लेबोरेटरीज कर लीजिए. यू गिवन टू ट्रेन द स्टूडेंट्स फ्रॉम इन एंड अराउंड भोपाल एंड इंदौर और दमोह और ग्वालियर, उनको ट्रेनिंग दीजिए. आपके एक्सपेक्टेशंस में इफ यू आर ट्रेनिंग 50 स्टूडेंट्स उसमें से 10 बहुत ब्राइट है,
Ask them, give them an incentive if they want to sign a bond with you. वो 5 साल का 2 साल का बॉन्ड साइन करके they will carry out the work in the same research laboratory, R&D को सपोर्ट करेंगे and after that they are free to go. तो इंडस्ट्री का जो मेजर क्रंच रहता है वो फाइनेंसेस मैनेजमेंट में रहता है, तो इंडस्ट्री सेटिस्फाइड है. अकेडमिशियंस का क्रंच रहता है कि दे डोंट हैव एडिक्वेट गवर्नमेंट फंड्स, तो हम लोग पूरे सरकार पे भी नहीं निर्भर होते हैं. तो एकेडमिशियंस का लोड कम होता है कि वो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी दे पा रहे हैं. इंडस्ट्री का ये होता है कि इन टर्म्स ऑफ इन द ब्लैंकेट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट दे आर गेटिंग द स्टूडेंट्स ट्रेंड, और वो क्योंकि कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के ट्रेनिंग में, वो बॉन्ड जो है विच इज फिल्ड बाय 10 स्टूडेंट्स और 50 स्टूडेंट्स टू वर्क फॉर देम, दैट कैन गो फॉर अनदर 2 years, 3 years, 4 years, 5 years डिपेंडिंग ऑन द रिन्यूअल एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस. उसमें अगर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है, को फंडिंग आता है, आपका शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस आता है, दोनों बेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन 60-40, 50-50. उस दैट विल हेल्प द स्टूडेंट. कोई भी चीज बुक्स में और इंटरव्यूज में और प्लेसमेंट्स में इतनी नहीं सिखाई जाती जब तक स्टूडेंट खुद करके ही डज नॉट एक्चुअली. इट्स लाइक टीचिंग यू ऑपरेशन ऑन अ यूट्यूब वर्सेस अभी हमारे पास मॉरिशस में क्रंच था, वी टॉट ऑल द स्टूडेंट्स सर्जरी ऑन यूट्यूब. हमने बहुत आसानी से कर लिया. गॉड नोज वो क्या करने वाले हैं. इतने डेंजरस ऑनलाइन डॉक्टर्स निकाले हैं हम लोगों ने कि किसको कहाँ काटेंगे हमें नहीं मालूम है. तो इट्स लाइक एक पेशेंट आता है, ही सेज कि इसकी रिप टूटी हुई है, तो वी यूज्ड टू टेल आवर स्टूडेंट्स, तुम्हारा आंसर होगा कि फोटोशॉप कर दो. ये ऐसे डॉक्टर्स पूरी एनाटॉमी हमने 2 साल के 3 साल के स्टूडेंट्स पूरी एनाटॉमी यूट्यूब पे की है. वो क्या आई मीन इट बिकम्स दैट. तो हम अभी कितना भी बोल रहे हैं, कितने भी डिस्कशंस हैं, जैसे ही हम आपको ऑन योर एक्चुअल वर्किंग ग्राउंड खड़ा करते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग जिटरी, आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, यू स्टार्ट स्वेटिंग. तो वो चीज जो होती है दैट डिटर्स. अ पर्सन में बी वेरी टैलेंटेड बट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म. वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता है? कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लैकिंग है, मे बी लैंग्वेज स्किल्स में है, कुछ भी चीज है. तो अगर इंडस्ट्री 2 साल किसी को ट्रेन करती है तो वो इंटेलिजेंशिया ला सकती है जो वो बहुत एक्सेलेंट है अपने इंडस्ट्रीज में. गेट देम टू द ग्राउंड. और इंडस्ट्री को आप बोलें कि अगर हम आपके इंडस्ट्री के इतने एम्प्लॉयज अगर शो करते हैं, आई मीन एट द हायर लेवल जो R&D ग्रुप्स टीम लीडर्स हैं, अगर आपके 5% टीम लीडर्स ये शो करते हैं इन टर्म्स व्हेन यू फाइलिंग टैक्सेस दैट दे हैव ट्रेन्ड सो मेनी स्टूडेंट्स, दे हैव अडॉप्टेड सो मेनी educational institutions, private as well as governmental. So we give you this much to establish your laboratory or this much relaxations. वो भी खुश, ये भी खुश, both parties are happy. The marriage alliance has worked. They'll work for a long term. और हम short term नहीं कर सकते. आज ये कंपनी आई कल चली गई, वो fabric नहीं होता. It has to have a myopic as well as a foresighted growth. और हर इंसान को satisfy रहना चाहिए. by the end of the day the industry should not lose their finances कि हम endless कर रहे हैं. यहाँ भी आप कोई अकेडमी में ऐसा नहीं कि हम इंडस्ट्री के लिए ट्रेन कर रहे हैं. दे आर स्टूडेंट्स को उतने दिन सैलरी मिलेगी, उतने दिन बॉन्ड होगा तो उसको सस्टेन करेगा. उसको थोड़ा टाइम दो, ही विल एनालाइज हिमसेल्फ एंड देन प्रोसीड व्हाट ही वांट्स. उसको उतने दिन का एक्सपोजर देना जरूरी है. सो बोथ लाइक वी इन ISC वर्क विद HAL के लोग भी आते थे हमारे, और हमारे यहाँ के लोग, बिकॉज वी आर वेरी फ्यू सपोर्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग. तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में HAL का मैसिव इन्फ्लक्स रहता था. वहाँ के सीनियर जो साइंटिस्ट थे, दे यूज्ड टू कम फॉर PhD इवन आफ्टर 10 years आफ्टर कैरियर. तो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आते थे. उनकी PhD और हमारी PhD में बहुत फर्क होता था. So if we can have a partnership between one government and another, we can have partnership, and as a whole the society grows. It cannot be one head and no tail. अभी जो मुझे लग रहा है MP में अगर अच्छे bright minds आ रहे हैं तो उनके followers बिल्कुल zero हैं. वो कहाँ पैर रखें? They are putting their foot on just water. So it is tier system, it is layer system, it has to be distributed across all, top to bottom. Junior most student from BSc or MSc or MBA first year till the top, सबको equal information, equal platform. And I certainly believe ये government websites को introduce करना चाहिए कि when I go industry and academia एक website बना दीजिए, वो time to time update होती रहे from all walks. Why only talk about IT, engineering and all those? There are other streams also which are struggling and gasping for breath. तो हम लोग तो biologists बोलते हैं हम लोग तो minority में, and we are always discriminated. एक तो पैसा बहुत खाते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी हमारी 30-40 साल बाद एक ड्रग निकलती है, वो भी कितने दिन चल जाए. मिनिमम लॉन्च ऑफ अ ड्रग, डू यू नो इट टेक्स 30 years. वी डोंट हैव एनी एंटीवायरल ड्रग फॉर लास्ट 30 years. आप कोरोना की ट्रीटमेंट की कहाँ बात कर रहे हैं? कोई भी एंटीवायरल ड्रग नहीं आई है वर्ल्ड ओवर.
30 साल, तो कंपनी बहुत डरती है। क्या लैक्यूनाज है, जब तक आप उसके साथ काम नहीं करोगे, यू वुड नो व्हाई कंपनीज हेजिटेंट टू पुट इन मनी. 50,000, 155 million compounds, not even one is in the market. तो हमारा इतना बड़ा गैप बायोटेक का रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक ही मंच पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठना है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड प्रॉफिट्स एंड फाइनेंसेस होना बहुत जरूरी है. पर इट हैज टू स्टार्ट, एंड इट इज टू स्टार्ट विद द स्टूडेंट्स जस्ट आफ्टर स्कूल. तो वो जो आपको बार बार उनसे इंटरेक्ट करने को मिलेगा, दैट विल बी द सीड ऑफ ग्रोथ. Otherwise, we will fall short. Very nicely put forward. Sir, I want to add on Yeah, that industry specific या institution specific तो problems बहुत हैं, जैसा मैम ने भी बताया अभी. तो ट्रेडिशनल कोर्सेज की भी अपनी व्यथा है, और साइंटिफिक कोर्सेज की भी अपनी व्यथा है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की अपनी खुद की व्यथा है, और इंडस्ट्रीज भी स्पेसिफिक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हम एक डिस्कशन फोरम जो अभी हो रहा है, ऐसा डिस्कशन फोरम, जैसा कि प्रशांत सर ने भी बोला कि 15 दिन यदि पौधे को पानी देंगे तो नहीं उसको फ्लरिश होने के बारे में सोच सकते. तो रेगुलरली डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए और एकेडमिशियंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस क्या डिलीवर कर रहे हैं, गैप वहां पर है. तो जब तक इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स नहीं बताएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आके कि उन्हें क्या चाहिए, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ये नहीं पता होगा कि उन्हें अपने करिकुलम में या अपनी पेडागोगी में क्या चेंज करना है, तब तक ये गैप फिल नहीं हो सकता. और जहां तक प्लेसमेंट सेल की बात है कि प्लेसमेंट सेल ही सिर्फ ये करेगा कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल से जाके मिलेगा और गैप फुलफिल करेगा, तो प्लेसमेंट सेल क्या पढ़ाता है क्लास में जाकर? स्किल सेट पता होने के लिए स्टूडेंट्स का आपको टीचर्स से इंटरेक्ट करना पड़ेगा. टीचर जानता है कि उसके किस बच्चे में कौन सी स्किल सेट है. तो टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट डिस्कशन फोरम्स में जरूरी है. प्लेसमेंट सेल में भी आप उन्हें मौका दीजिए, लेकिन प्लेसमेंट सेल तक तो टीचर तब पहुंच पाएगा ना जब डिमांड सप्लाई रेशो बराबर होगा. डिमांड सप्लाई रेशो बराबर नहीं है. फैकल्टीज, जैसा कि मैंने कल भी कहा कि फैकल्टीज इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स सर, अपार्ट फ्रॉम द esteemed institutes, IITs and IIMs and some more institutes, the teachers exist only on papers. एडजंक्ट फैकल्टी से यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, तो कैसे गैप फिल होगा? तो टीचर जब तक नहीं पहुंच पाएगा प्लेसमेंट सेल तक, बिकॉज टीचर तो पूरे 6 घंटे एक से दूसरी क्लास में दौड़ रहा है पढ़ाने के लिए कि उसका नेक्स्ट लेक्चर कब है. दिस इज द प्रॉब्लम. यूजीसी रिफ्रेशर कोर्स में हमें बताती है कि हमें 3 घंटे प्रिपरेशन करने की जरूरत है एक लेक्चर के लिए. 6 घंटे के कॉलेज में अगर हम 3 घंटे लेक्चर प्रिपेयर करेंगे तो इसका मतलब हम 2 ही लेक्चर पढ़ा रहे हैं, बट देन हमारा लेक्चर लोड तो 5 है. How the gap can be fulfilled then? This is the problem. This is the ground reality of mediocre institutes especially. यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. जैसे हमारे कॉलेज में एसकेएफ की लैब हमने बना कर रखी है, बहुत ढेर सारे लैब्स बना कर रखे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं कि अगर इंडस्ट्री हमारे पास नहीं आ रही है तो हम उनको इंडस्ट्री रेडी कैसे बनाएं. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो हमें चाहिए कि हम बच्चों में एक लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस करें, उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप करें, टेक्नोलॉजी में उनको इन्वॉल्व करें. ऐसा नहीं है कि एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ रहा है तो वो मैनेजमेंट ही पढ़ेगा. उसको सीएसआईटी भी पता होना चाहिए, उसे सिविल इंजीनियरिंग भी पता होना चाहिए, उसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी पता होना चाहिए, सारा नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि जब वो इंडस्ट्री में आएगा तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि तुमने सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ा है तो सिर्फ एचआर देखो. अगर एक एचआर भी है तो उसे सारी फील्ड्स का, सारे डिपार्टमेंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अब बात ये रही कि अगर इंडस्ट्री आना चाहती है कि वो किस तरह से एकेडेमिया में आए, तो उनके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म हैं. वो सीडीसी, ईडीसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो नहीं है तो वो अपनी एक लैब डाल सकते हैं. अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर स्किल सेट के स्टूडेंट्स चाहिए तो वहाँ पर जाकर वो अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चला सकते हैं. जैसे आई एम इम्प्रेस्ड बाय वन टर्म, दैट इज जॉइंट मेंटरशिप प्रोग्राम. So I believe that will definitely bring some change into the academia. इसके अलावा हम चाहें तो एक जो हमारा पैरालाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम जो इंडिया में चलता हुआ है, पैरालाइज्ड, आई विल सीरियसली से इट, पैरालाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम. आई हेट दिस सिस्टम. जिस तरह से आप बच्चों को रेटिंग करते हैं कि आपको इतना परसेंट लाना है, हर जगह से बच्चे को सिर्फ यही फोर्स आता है कि पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि भैया 90% से ऊपर लेकर आना है. फैकल्टीज जो है उसी बच्चे को बहुत अच्छे से देखती हैं जो बहुत अच्छा स्कोर लेकर आया है. कभी भी उस बच्चे की तरफ नहीं देखा जाता है जिसके पास एक बहुत अच्छा स्किल सेट है. जरूरी नहीं है, ये भी एक स्किल सेट ही है. अगर एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तो ये उसका स्किल है,
और वो अच्छे से स्कोर कर रहा है, ये उसका स्किल है। लेकिन एक बच्चा जो दूसरी चीजें कर रहा है वो उसका स्किल है, तो हम उस स्किल के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं फ्रंट बेंचर्स से। तो इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्री ने क्राइटेरिया क्रिएट करके रखा है ना कि 60% वाले से ऊपर वाला बच्चा ही बैठेगा प्लेसमेंट में, तो ये भी एक बहुत डीमोटिवेटिंग थिंग है जो मुझे ऐसा लगता है। हमको उन बच्चों को भी मौका देना चाहिए जो 60 से ऊपर नीचे वाले भी हैं, मतलब उनमें हो सकता है कि वो उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मर हो, बुक से ज्यादा अच्छा पढ़ते हो या बुक से ज्यादा अच्छा सोचते हो। तो राइट Or Actually, just to yeah, add on one more yes, point, many times it says, especially in technical and science में वो कहा भी जाता है कि what you see in practice is different from the theory. Theoretical Right. knowledge और आपने जो you know to inculcate that thing or incorporate that aspect into the academia. Can I Uh, just Add to interrupt that, one there is one more question from the audience. Good afternoon, everyone. Myself, Imadri Mishra. I am assistant professor at IMI. What I think, like, we are talking about industry exposure. So what I think is it should not start from college. It should start from school itself. Like more when students will come to know about industry from school only, that what things are goes in industries. So it will be beneficial for them in every perspective. And if I talk about environment is very dynamic. So upgradation of skill of teacher and students are important in every way. And what I think is sometimes the what a startup faces investor problems, I guess startup. So what we can do is we can like banks can low down the interest rate, and banks can also support the startup, so that main problem what startup faces monetary, I think monetary financial crisis, what I feel sometimes startup feels. So what I feel that banks and the investors should motivate the startups so that students can bring more innovation and them. And even sometimes teachers play a very important role in students life, I agree, because teacher can be a counselor. Being a counselor, teacher can know that what exactly student want and what student is looking for, so teachers can build their future accordingly. So this what I think. Actually, I want to add one more point here. That, one of the students said practical exposure is very necessary. Yes, because what is happening nowadays, we are not looking after the functional literacy. Functional literacy जो है एक तरह से पूरी तरह से missing है, क्योंकि we know the definition but we do not know that how to perform that task. वो क्यों डेफिनेशन बनी है, वो क्यों का आंसर किसी के पास भी नहीं होता है। और अगर कोई वाई पूछ लेता है तो टीचर उसके ऊपर क्वेश्चन करती कि ये बच्चा अच्छा नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही करता है। तो वो हमें वो अगर किसी ने वाई पूछा है ना, दैट इज डेवलपिंग अ टीचर, आई बिलीव। सो यस, यस प्लीज। चीजें जानता है, वो लिखने में कैपेबल नहीं हो, वो बोलने में कैपेबल हो, तो ये चीज भी एक है। राइट, एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया है ना, ये हटना चाहिए, तभी जाके सबकी लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत अच्छा होगा। मैम आई थिंक कि एग्जाम और जो मतलब हमारे परसेंटेज वो मैटर नहीं करते किसी इंसान की कैपेबिलिटी जानने के लिए। Can I mention one thing? Sure, go ahead. मैं इसका आंसर दे दूं। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है, जो रेनाउड कंपनीज हैं, मैं प्लेसमेंट्स की बात करता हूँ, रेनाउड कंपनीज जो हैं उनका क्राइटेरियाज रहता है, राइट? उनका क्राइटेरिया 60% 70% रहता है, लाइक वी टॉक अबाउट टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अदर कंपनीज की, लाइक वी टॉक अबाउट दी कंपनीज लाइक इंजीनियर बाबू इज देयर इन इंदौर, राइट? इट इज अ 300+ कंपनी, मतलब 300 के आसपास एम्प्लॉइज हैं। देयर इज ऑल्सो वन कंपनी लाइक सीआईएस देयर। CIS में approximately 800 to 900 employees हैं, but they are not having any type of criteria. They just want skills. तो जिन स्टूडेंट्स के पास में परसेंटेजेस नहीं है, वो अपनी स्किल से डेवलप कर लें, डेफिनेटली उनको जॉब मिल जाएगी मार्केट में, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट। जिनको हम डेवलप कर सके,
they should have potential to get developed. ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप कुछ रोज नया सीखने की इच्छा रख रहे हो. दैट इज इनफ फॉर small companies, and definitely this will a very good growth path for every student, because initial जो आपके 2-3 साल होते हैं, that will develop you for long lasting sustainability structure in any industry. Can I just pitch in here? बेटा जैसा आपने अभी यहाँ पे बोला कि 50% वाला भी जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, तो माना 50% वाला बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दो पहलू हैं. विद्यार्जन के दो पहलू होते हैं, एक होता है अध्ययन, दूसरा होता है अवलोकन. तो जब आप अध्ययन करते हो तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं शायद अध्ययन में इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा अवलोकन बहुत अच्छा है. दैट मीन्स आई एम गुड इन ऑब्जर्वेशन स्किल्स बट आई एम नॉट गुड इन माई स्टडीज. सो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों से ही आपकी राह जो है वो मजबूत और आसान बनती है. तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता किसी भी स्टूडेंट को, भले मैं फैकल्टी हूँ, ट्रेनर हूँ या प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ, कि ठीक है बेटा अब किताबें तो आउटडेट हो गई, टीचर भी आउटडेट हो गए, टीचर भी अच्छे नहीं है, फिर तो स्टूडेंट फील करेगा कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास ऑप्शन. तो इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों, पढ़ना भी है और ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी मजबूत करना है. तो दोनों सिस्टम्स जो लगता है मुझे वो हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. बच्चों ये एक नया ट्रेंड आ गया है सर, ये ट्रेंड आ गया है, अरे किताबों में क्या रखा है, और 3 इडियट्स ने बड़े अच्छे से मोटिवेट कर दिया हमको. बेटा रखा तो किताबों में ही है, लेकिन किताब से पढ़कर उसे अनुभव करना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है. सो आपको भी एक बार रीच आउट करना पड़ेगा, आपसे बड़ों को, Application सभी is लोगों very को. important. The knowledge that you acquire, the application is very important. Can I just pitch in one thing? You can continue later. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में और जो मैंने मेडिकल एजुकेशन का कोर्सेज किया है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिजाइनिंग द वे ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. जो इन्होंने 2 वर्ड्स यूज किए उसी को मैं इंग्लिश में बोलती हूँ. वी आर लुकिंग फॉर साइकोमोटर स्किल्स. और साइकोमोटर स्किल्स 4 चीजों में बनते हैं: नोज हाउ, शोज हाउ. तो आपको मालूम है और आप मुझे बता सकते हैं जैसे एटीएम कार्ड कैसे डालना है. शोज मतलब आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आर्टरी, जुगुलर आर्टरी कहाँ काटना है और कैसे काट के आप वो ऑपरेशन कर सकते हैं. दैट्स शोज हाउ. तो एक जो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है कि सिर्फ मार्क्स है. अभी मैंने इवैल्यूएशंस किए, somebody may be good in public presentation, somebody may be good in presentation of slides, some may be good in oration, some may have skills of writing. तो हमारा मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज बीइंग डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. तो अब आपको ये डर नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कि मेरे को इतना तो लाना है. यस, लाइक ही सेड कि सॉल्यूशन आपकी किताबों में ही है, वो स्लाइड शेयर के स्लाइड के 5 बुलेट्स में नहीं है. पढ़ना आपको है, डूबना उसमें है, रिप्रोड्यूस भी आपको करना है. आप नहीं कर पा रहे हो तो वी विल हेल्प यू डू दैट. बट साइकोमोटर स्किल्स प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा जरूरी है कि अनटिल फ्रॉम द स्रोत जिसे कहते हैं, दैट इज बुक्स, वहां से लेकर आपके डिलीवरेबल ऑब्जेक्टिव्स तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो आप उस जर्नी को कंप्लीट नहीं करेंगे. और जब तक हम लोग आपके साइकोमोटर स्किल्स को नहीं इवॉल्व करवाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड एट ऑल इन कॉम्पिटिशन. जितना था ये पिछले जनरेशन का था, ये हमारी जनरेशन का था कि मार्क्स पे ही है. प्लीज कम आउट ऑफ दिस. ऐसा कोई नहीं सोच रहा है, पर इतना भी नहीं है कि 30% आ जाए. और अब आप जो बच्चा, एक टीचर का मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जो बात बोली बहुत अच्छी बोली कि वी कैन नॉट टेक अवे द बर्डन ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ नॉट स्टडिंग. तो मैं अपनी 8 to 8:50 क्लास में, मेरा कलीग एक 8:30 पे आया. सो माई टीचर सेड दैट आई डोंट माइंड एनी टाइम यू गो एंड कम, पर 8 o'clock विद अ 4 डिग्री टेम्परेचर में जो आपके कलीग्स 6 बजे उठ के 7 बजे ऑटो लेके या बस लेके या व्हीकल लेके जो मेरी क्लास में 7:45 7:45 पे आके बैठे हैं, ये उनकी इंसल्ट है. सो प्लीज लीव द क्लास नाउ. तो मैं ये नहीं, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो 80% आ रहा है, 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, वो बच्चा भी 20 घंटे मेहनत कर रहा है, उसके बराबर आके आप खड़े हैं. Yes, we agree it is not a single factorial, it is multifactorial of assessment. तो जब तक आपकी साइकोमोटर स्किल्स नहीं पॉलिश होंगी, वो रट के पास आ रहा है तो उसको उस तरह से इवैल्यूएशन हो जाएगा. जो बिल्कुल एवरेज स्ट्रगल कर रहा है, 50-60 आ रहा है, आई वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट,
तो अगर आप एवरेज आ रहा है पर ऐसा नहीं है, दिस इज द एंड, ही हैज अदर स्किल्स. सो knows how, shows how. Now all evaluation in new education policy will be based on psychomotor skills. कि आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया, पढ़कर आप कितना बता सकते हैं और कितना एग्जीक्यूट कर सकते हैं will be a complete package. Anything less than that will not be acceptable. अगर आप, मैं बायोटेक में नहीं कर पा रही हूँ तो इंजीनियरिंग में कर लूँ, इंजीनियरिंग में नहीं कर रही हूँ तो मैनेजमेंट. ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपना निश ढूंढें, अपना एक्सपर्ट फील्ड जहां आपका सारा पैकेज बनता है. नॉट पीयर प्रेशर, नॉट पेरेंट्स प्रेशर, आप खुद को इवेल्युएट करें. I have counseled one student in MBBS first year to leave his career in medical and go to JJ School of Arts. The kind of painting that he did was beyond anybody's perception without zero level of training. He has gone to JJ School of Arts and now he's a leading painter. इतना बड़ा डिसीजन कि एमबीबीएस छोड़कर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे जाना इज नॉट अ इजी गेम. सो आपको अपने कंटिन्यूसली ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चाहिए. बट अब जो न्यू एनईपी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो बीएससी का प्रोग्राम्स हमने डिजाइन किए हैं, उसमें मेजर कोर्सेज, माइनर कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, सॉफ्ट स्किल्स, ऑल दीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन योर करिकुलम. जब तक हम करिकुलम में कंपलसरी नहीं करेंगे, मैं इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से सरकार की जो पॉलिसीज होती है वो बता सकती हूँ कि जब तक उन्होंने क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं रखी सॉल्ट बनाने की, नमक बनाने की विदाउट आयोडीन, 10 साल की जेल होती है, तब तक वो चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हुई. और जब उन्होंने कहा कि इंडिया में कोई सॉल्ट बिना आयोडीन के नहीं बनेगा, हमने वो देखा, लोगों ने फॉलो किया, जिन्होंने नहीं किया उनको पनिशमेंट मिली. एंड नाउ वी सी ऑल गॉइटर रिडन केसेस, स्पेशली इन एमपी और रायपुर एरिया में इतना रैम्पेंट था, आज वो चीज नहीं दिखती है. तो कहीं कहीं यू हैव टू कम डाउन विद आयरन हैंड. जैसे इन्होंने कहा, उनकी बात को समर्थन देते हुए कि आपका सोल्यूशन बुक्स में ही है. बुक्स में नहीं है तो बुक, आई डोंट मीन यू सिट एंड रीड अ बुक, आई मीन टू से वो नॉलेज आपको कहीं से भी लेनी है एंड यू हैव टू रिप्रोड्यूस. हो सकता है आप एक फील्ड में नहीं आ रहे हो, आपके साइकोमोटर स्किल्स होंगे. कुछ बच्चा जो बिजनेसमैन का होता है वो 2 मिनट में कैलकुलेशन करके दे देता है. आप ट्रेन में जाइए एंड यू, इफ यू आर अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं. तो वो जो आर्ट उसमें होता है, उस आर्ट को पहचान के एंड यू पॉलिश इट. That's how new education policy of 2021 government of India has adopted, and we are in practice of implementing it this year itself. तो अगर इस ईयर इम्प्लीमेंट होगा तो we'll see a total change generation, but you need to polish on those skills. Thank you. But academic institutions are rethinking and reassessing the curriculum based on NEP. But in the same manner, sir, we need to revise, the industries need to revise the criteria of selecting the students as well. बिकॉज उन्हें भी पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यदि बच्चा आएगा तो वो शायद एक ही स्किल में स्पेशलाइज ना हो. उन्हें पता होना चाहिए कि बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन नाम की डिग्री भी मिलेगी बच्चे को. यदि वो सीबीसीएस से आएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से आता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन भी मिलेगी. और हो सकता है वो सिर्फ मैनेजमेंट में ठीक ना हो, वो सिर्फ कॉमर्स में ठीक ना हो, लेकिन वो इंजीनियरिंग में ठीक हो. तो उनसे रिलेटेड जॉब रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरियाज भी तो रीअसेस होंगे, वो भी तो चेंज होंगे. इंडस्ट्रियलिस्ट को ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है कोई स्टूडेंट उनके पास ऐसा आए कि उसने एक ही साल पढ़ाई की हो और उसके पास सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, जैसा एनईपी लिख रही है कि 1 साल बाद भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं. आपको लगता है कि आपने जितना ज्ञान अर्जन करना था उतना कर लिया है, उसके बाद आपके अंदर स्किल्स आ गई हैं. मैम जस्ट, और इसमें सर 1 मिनट बस में, और इसमें एज एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि डिग्री कैन गेट यू इनसाइड द डोर, लेकिन आपकी स्किल की वजह से आप उस दरवाजे के अंदर रह पाओगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है. हम स्टार्टअप्स हैं, भले ही बाहर से हम लोग आईपॉड और आईपॉड लेके घूम रहे हों, लेकिन सबकी बनियानें फटी हुई हैं. तो आप अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ऑब्वियसली कुछ कंपनीज के लिए जरूरी, क्योंकि उनको बल्क में हायरिंग करनी है, 1000 2000 5000 लोगों को हायर करना है. ये लोग ठीक हैं, ये लोग नहीं है, उनका एक बेसिक क्राइटेरिया हो सकता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल मार्केट सिनेरियो, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर जो एक मीडियम स्केल की कंपनी है, मतलब रेस्ट ऑफ द 95% कंपनीज में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्किल बेसिस पे ही होता है. अगर आपने स्किल में इंटरव्यू में, आप तो डिग्री में तो कैसा है कि आपने चीटिंग करके भी पास हो गए हो तो वी डोंट नो, आपका डिग्री 65% दिखा रहा होगा, 75% दिखा रहा होगा, लेकिन जब आप, जैसा मैडम ने बोला कि जब आप शो ऑफ करेंगे तब आप फेल हो जाएंगे. जैसे ही आप शो ऑफ करेंगे, फेल होंगे, प्रॉब्ली आपके हाथ में टर्मिनेशन लेटर होगा, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे रहे हैं कि आप एक बार आ गए आप फिक्स हो. आप
तो until and unless you keep on honing your skills, जब तक आप आपके skills को keep on developing, keep on improving, क्योंकि रोज नई चीजें हो रही हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अब SEO कर लेंगे, अब SEO की अगर आप SEO की क्लासेस ले रहे हो तो आप मतलब प्रॉब्ली आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग हिट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हिट है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं अच्छे हैशटैग डाल के प्रमोट कर दूं, तो you'll never be able to achieve what others are achieving, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नए टूल्स आ गए हैं। गधा हमाली बंद करने के कई सारे, अब हैशटैग पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट होता था, आज मुझे $5 पर मंथ में टूल्स मिल जाते हैं जिसमें मैं सेलेक्ट कर सकता हूं मुझे कौन सा हैशटैग चाहिए। जो पहले रिसर्च करने का एक टॉपिक होता था जिसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड आदमी लगाना पड़ता था, अब वो मैं $5 पर मंथ पे विद क्लिक ऑफ अ बटन इंडस्ट्री के बेस्ट हैशटैग में निकाल के दे सकता हूं। अब आपकी ये स्किल आप डेवलप कर लोगे तब तक नया टूल आ जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें जब तक आप खुद को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको लग रहा है कि आज की मत सोचो, आप कल की सोचो, आज की जो स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, डोंट थिंक ऑन दोज लाइंस, थिंक ऑन टुमारो कि कल क्या स्किल सेट आने वाली है। जब तक आप उस बारे में सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, अगर मैं सोचूं मैं एक्स 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 करता जाता हूं, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि अब वाई का जमाना आ चुका है। जब तक आप वाई को अचीव करने की कोशिश करोगे, जेड आ जाएगा, शायद हो सकता है जेड प्लस आ जाए, यू नेवर नो। तो अपने को जब तक हम सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक P&L मायने रखता है एज अ स्टार्टअप। मैं देखता हूं कि ये बंदा इज ही गेटिंग द जॉब डन फॉर मी। इफ ही इज गेटिंग द जॉब डन, वो 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, डज नॉट मैटर, डॉक्टरेट है, मतलब डॉक्टर एंड नॉट MBBS डॉक्टर, बट डॉक्टर है, डज नॉट मैटर टू मी। वो हो सकता है अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, बट अगर वो मेरे लिए ही इज नॉट गेटिंग द जॉब डन, ही इज ऑफ नो यूज टू मी इन माय P&L, तो आई हैव टू से गुड बाय टू हिम, टाटा बोलना पड़ेगा। अदरवाइज आई हैव टू फाइंड एन अल्टरनेटिव वे कि मैं इनका और यूज कैसे कर सकता हूं। अंटिल अनलेस मैं वैसा नहीं करूंगा, सारी डिग्री सारी आपको स्किल पे काम करना है बॉस। अंटिल अनलेस यू आर वर्किंग ऑन द स्किल्स, आप डिग्री चाहे, डिग्री इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो डोर के अंदर आपको एंट्री कराती है। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो आप दरवाजे के अंदर ही शायद नहीं जा पाओगे, या फिर आप इतने चमक जाओ कि आपने जैसे वो जो एक वो रसोड़े में कौन था जिसमें वो म्यूजिक बनाया, मुकाते, यशराज मुकाते, राइट। तो अब वो उसको स्किल्स डिग्री, आपको पता है कि उसके पास कोई डिग्री है भी कि नहीं है, हमें नहीं पता, राइट, बट ही इज वायरल। व्हाई? क्योंकि उसने आपकी अपनी स्किल को इतना होन करके रखा हुआ है, इतना ज्यादा वो चमक चुका है कि वो दूर से नजर आ रहा है। अगर आप दूर से नजर आ रहे हो तो स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन 99% ऑफ द केसेस में आपको दरवाजे के अंदर दिखने के लिए आपको डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री के बाद आपकी स्किल आपके काम आएगी और वो जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी। दिस इज व्हाट आई हैव टू ऐड ऑन। So, what I want to say here कि आप एक blended teaching pedagogy वाला पैटर्न अगर कॉलेज पे रखेंगे तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट जो है इंडस्ट्री रेडी होगा। जैसे कुछ सर ने जैसे कहा भी जो परसेंटेज सिस्टम है, हमने उस चीज़ को भी काफ़ी ड्रैग किया था। तो मैंने हमेशा देखा है कि जब मैं फॉरेन कंट्रीज़ को इसलिए भी बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि उनके जो तरीके होते हैं लोगों को सिलेक्ट करने के वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे दे आस्क यू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। आपसे कम्युनिटी सर्विस के बारे में पूछेंगे, आपसे आपके वॉलंटियर एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। तो एक तरीके से वो स्टूडेंट को पूरी तरह से समझ चुके होते हैं, वो बच्चा इंटरव्यू देने आए उससे पहले ही वो समझ जाते हैं कि बच्चा क्या है। तो अगर उस तरह का भी सिस्टम हम हमारे इंडिया में अगर हम फॉलो करें, अभी हो गया है, काफ़ी जगह हो गया, जैसे SBI का एक फेलोशिप का एक फॉर्म आया था। फेलोशिप के जनरली जो फॉर्म आप अगर फिल करोगे तो उसके अंदर ऐसा ही होता है कि उसमें काफ़ी अच्छे से बच्चे को समझ लिया जाता है कि ये क्या है और ये क्या हमको कंट्रीब्यूट कर सकता है, और आपका सिलेक्शन वही हो जाता है जिसमें आपने फॉर्म फिल करा। यस, और ग्रेड इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। तो आई बिलीव कि वैसा भी कुछ अगर हम करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और जो एक ये चल रहा है ना कि ड्रॉप आउट ने स्टार्टअप करा, ड्रॉप आउट ने स्टार्टअप करा, राइट। तो ड्रॉप आउट भी जो हुआ है वो हार्वर्ड से हुआ है भाई, IIM से हुआ है, IIT से हुआ है वो ड्रॉप आउट। तो उसके पास वो ऑलरेडी चीजें हैं, उसके बाद वो ड्रॉप आउट होकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो आप वो भी तो देखो कि आई मीन अगर मेरे पास स्किल है, मैं बता देता हूँ, मैं एक बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे कभी भी 70% के ऊपर जिंदगी में नहीं आए, है ना। तो मैं हमेशा रेंज करता था 60, 65, 70, और मैं बड़ा प्राउड हूँ इस मामले में, क्योंकि मैंने जितनी भी अपॉर्चुनिटी मुझे टू बी ऑन द स्टेज मिलती थी, I've grabbed all those opportunities, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म में समझ लिया था कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। सबसे ज्यादा जो सर करा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। एक बहुत सबसे ज्यादा स्टोरी टेलिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग विच इज हैपनिंग अराउंड। आप क्या कर रहे हो डज नॉट मैटर, लेकिन अगर आप बता सकते हो कि आई हैव समथिंग इन माई पॉकेट विच कैन होल्ड 10,000 सॉन्ग्स एंड दैट्स एन iPod, दैट्स स्टोरी टेलिंग फॉर यू गाइज, एंड देन यू कैन सेल एनीथिंग। तो अगर आपके पास वो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं, अगर आपके पास वो राइट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो मैं नहीं समझता कि देयर इज एनीथिंग दैट कैन स्टॉप यू। और एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे
सीईओ को बड़ी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए यू गॉट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि आपका काम ये होता है कि आप लोगों से काम करा सकते हो। लोगों से काम कराने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनसे हंटर मार मार के काम कराओ। लोगों से काम कराने का मतलब ये होता है कि उनको पुचकार के, डांट के, मोटिवेट करके, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। यार ही मनी हेस्ट देखिए सबने, प्रोफेसर का जो काम होता है वो काम होता है एक स्ट्रॉन्ग सीईओ का, बिकॉज ही इज अ गुड कम्युनिकेटर। बाकी सबको काम कर रहा है कि यार ये डेटा हैकिंग में अच्छा है, ये मेरा वॉल तोड़ देगा, ये मेरा ये काट देगा, ये मेरा वो कर देगा। सो यू गॉट टू हैव दैट असेसमेंट स्किल कि मैं किस में अच्छा हूं एंड ट्राई एंड होन दैट स्किल। क्योंकि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप सबके साथ कम्युनिकेट करके यू कैन अचीव दैट टारगेट। अगर आपके पास वो नहीं है तो किसी एक चीज में आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपको उस जगह से कोई भी हिला नहीं पाए। Any other questions from the audience? नहीं, मैं इसमें एक आंसर देना चाहूंगा। आप क्या कर रहे हैं अभी? पीजीडीएम, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? ओके, तो क्या आप किसी कंपनी में एज एन इंटर्न अकाउंटिंग का आप जॉब कर सकते हैं? उसके लिए आपको किसी कॉलेज, किसी गवर्नमेंट, किसी न्यूज़पेपर, किसी लेटर की जरूरत नहीं है। तो वाई आर वी डिपेंडेंट ऑन समबडी की कोई और ही काम करे? कॉलेज मुझे बताए कि ये करो, गवर्नमेंट मुझे बताए कि ये करो, मुझे मेरी स्किल्स को होन करना है। आई डू नॉट रिक्वायर अ पेपर टू डू दैट। मैं इमीडिएटली जाऊंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई, मैं 2 घंटे तेरे पास आऊंगा, तेरी जो बिलिंग होगी मैं डेटा एंट्री करना स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट डूइंग दैट, नोबडी स्टॉपिंग यू। Entrepreneurship is a lifestyle. It's a one of the biggest decision that you'd be taking for yourself. अगर आप अगर आउटगोइंग पर्सनालिटी भी बनना चाहते हैं तो इट्स अ डिसीजन, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीजन, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज दैट यू विल बी टेकिंग। जीएसटी फॉर्म कैसे भरते हैं सीखो, यूट्यूब पे दुनिया का ज्ञान अवेलेबल है। यू डू नॉट रिक्वायर एनी फैकल्टी, एनी स्टूडेंट, एनी कॉलेज, एनीथिंग एल्स टू लर्न। दुनिया के जमाने के कोर्सेज आज आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हैं। अगर हम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि आई एम डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, जो मुझे आके गाइड करे, आके मुझे बताए कि अब ये करना चाहिए आपको, तो हम लोग शायद अभी भी हम हैंड होल्डिंग ढूंढ रहे हैं। बहुत स्कूल का टाइम गया। अब स्कूल में हम हैंड होल्डिंग करते थे कि अब ये कर लो, स्पून फीडिंग जिसको हम बोलते हैं। यू डू नॉट रिक्वायर स्पून फीडिंग नाउ यार। अब देश का प्राइम मिनिस्टर आप चूज कर सकते हो, तो आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है वो तो आप चूज करना ही चाहिए आपको। तो अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, स्टार्ट डूइंग दैट। डोंट गेट पेड फॉर इट। 2 घंटे काम करना स्टार्ट कर दो, 3 घंटा काम करना स्टार्ट कर दो, हफ्ते में 1 दिन काम करना स्टार्ट कर दो, हफ्ते में 2 दिन यूट्यूब पे सीखना स्टार्ट कर दो। अपग्रेड के कोर्सेज हैं, जमाने के चीजें अवेलेबल हैं। हम लोग हमेशा ये देखते हैं, हम लोग कोई ना एक्सक्यूज के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है, हमारी फैकल्टी अच्छी नहीं है, हमारी सरकार अच्छी नहीं है, हमारा एमपी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। आई हैड थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू क्विट इंदौर एंड वेंट बैक टू एनी अदर बिग सिटीज, राइट? लेकिन आई स्टेड इन इंदौर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टीयर 2 का जो पोटेंशियल है वो अभी भी अनटैप्ड पड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर टीयर 2 में हमने, क्योंकि हमारे दिमाग में ना हमेशा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बचपन से ही हमारे पास, हम ही हमेशा एक कंपटीशन में रहते हैं। यार मुंबई वाले ये कर रहे हैं तो इंदौर वाले क्या करेंगे, तो हमें दिमाग में वो ऑलरेडी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन को वॉलपेपर या इंस्टाग्राम के स्टेटस की तरह, व्हाट्सएप के स्टेटस की तरह देखते हैं। अभी हम लोग ने सेशन अटेंड करा, 15 मिनट के लिए वी आर मोटिवेटेड, हम सभी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल देंगे कि मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं कोई बढ़िया मोटिवेशनल वो देख लूंगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट। और ये जो गुड वाला एग्जांपल दिया, दिस इज एग्जैक्टली मी। प्रॉब्ली अगर आप मुझसे 2 साल पहले मिलते हैं तो आई यूज्ड टू वेट अराउंड 90 केजीज। मैं 90 किलो के आसपास का व्यक्ति था। क्या हमें नहीं पता कि वेट लॉस कैसे करते हैं? आज मैं जिससे भी पूछूंगा उसको भी पता है, गर्म पानी पियो, नींबू पानी पियो, इतना टाइम योगा करो, वॉक पे जाया करो, एक्सरसाइज करो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन वी आर जीरो, वी आर बिग जीरो। आई टुक अ प्लंज। मैंने सोचा कि यार बॉस मुझे, क्योंकि मैं मेरे फोटो देख रहा था और दिन ब दिन वो बद से बदतर होते चले जा रहे थे। तो अब मुझे कोई कॉलेज, गवर्नमेंट, सरकार ये आके नहीं बोलेगी कि भाई तुझे वेट कम करना है। दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, इट्स योर पर्सनल चॉइस दैट यू हैव टू गो अहेड एंड डू समथिंग अबाउट इट। इफ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग, चेंज इट। आप ही को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग कोई और आके आईआईटी, आईआईएम, जितने बड़े बड़े कॉलेजेस इस पोडियम पे बैठे हुए हैं, दे विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वो एक डिग्री है विच इज गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर पर्सनल डिसीजन।
जो भी आप लाइफ में लेने वाले हो वो आप खुद के ही उसके कर्णधार आप ही हो. यू डू नॉट रिक्वायर somebody else's certification कि यू आर गुड इन दैट. नो, आईने में देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गुड इन दैट, दैट मीन्स यू आर गुड इन दैट. अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि मुझे आता सब होगा लेकिन शायद मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं, तो आपको पता है कि आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो, वर्क ऑन दैट स्किल. हम लोग ये क्यों कह रहे हैं हर बार कि हम सिस्टम चेंज कर देते हैं? यार सिस्टम के हिसाब से चेंज हो जाओ एक बार के लिए, या आप उस डेजिग्नेशन उस लेवल पे पहुंच जाओ जब आपके हाथ में पावर हो कि आप सिस्टम चेंज कर सको. तब तक तो आपको फॉलो ही करना है. जब आपको फॉलो करना ही है तो अच्छे से करो ना. हम लोग, मतलब मेरा सिंपल सा ही मानना होता है कि स्टॉप क्रिबिंग अबाउट लाइफ. लाइफ इज ब्यूटीफुल. अगर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते चले जाएंगे तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होने वाली हैं, ठीक है. लेकिन जैसे ही हम लोग ने सिर्फ हमारा नजरिया चेंज कर दिया, प्रॉब्लम की जगह पे हम सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट कर दिया, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी डिग्री इतनी कमजोर क्यों है, आपका मैं कम्युनिकेशन में इतना अच्छा क्यों हूं, मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती है, मुझे एक्सपोजर्स क्यों नहीं मिलता है, ये सारे जवाब आपको खुद से ही मिल जाएंगे. आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही है सब कुछ. मोह कहाँ ढूंढे रहे, क्या है वो, मेरे साथ रहे. ना मैं काबा ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ऐसा कुछ है. एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको देता हूँ. यहाँ पे शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में आएगा सभी को. कि एक मेरे पास में हर तीसरा बच्चा एक शिकायत लेके आता है, सर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, सर अंग्रेजी की बड़ी समस्या है. मैंने कहा बेटा ठीक है, सर कैसे सीखें, तरीके बता देता हूँ. सर वो माहौल नहीं है घर पे, क्या करें? मैंने कहा बेटा बाप बदल दो, माँ बदल दो. ये भी संभव नहीं है. अच्छा, माहौल नहीं है. मैं एक सवाल पूछता हूं हर उस बच्चे से, जब, और आपसे भी पूछ रहा हूं, कि जब भी आप किसी मॉल में गए, जो कि गए होगे, किसी होटल में गए, इंस्टाग्राम पे किसी से बात की, कुछ भी किया, कितनी बार आपने इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन इनिशिएट किया? दिस क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपने कितनी बार प्रोएक्टिवली एफर्ट मारे उस चीज के लिए? सो अगर आपने ही माहौल अपना क्रिएट नहीं किया, जैसा कि सर ने अभी ये पूरी बात है, इसी को समअप करता है मेरा एग्जांपल, अगर आपने आपका एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और वेट किया कि वो प्रैक्टिकल वाला जो एटमॉस्फेयर है वो हम 4 लाख रुपए में खरीद लेंगे एवरेज, है ना, तो वो नहीं आएगा, इतना सस्ता नहीं है वो. ठीक है, वो सिर्फ प्रयास से ही होगा. और जब आप खुद उसके लिए प्रयास करेंगे, मैं आपको मेरा उदाहरण देता हूं. मैं एक सरकारी स्कूल से आता हूं बच्चा, है ना, और एक ऐसे स्कूल से मैं बिलोंग करता हूं जहां पे शायद कवेलू के नीचे बैठ के हम पढ़ा करते थे, है ना. और आज देखा जाए तो मैं एलपीयू के अंदर आई वाज द हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और वहां पे मैंने 5000 प्लस स्टूडेंट्स को कोच किया. और मैं बता रहा हूं आपको कि 95% वाले, 96% वाले स्टूडेंट भी ऐसे खड़े रहते थे कई बार, सर आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना है. मैंने कहा बेटा 95 तो मेरे नहीं आए कभी, तो कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं बढ़ा तेरा. तो देन शी रिप्लाई, सर वो तो ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया, पर एक्चुअली में सर एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया जहाँ पे हम ज्यादा बोल पाते. जो मैम ने अभी बोला कि वो स्टेज जो है वो तो हर जगह है बेटा. वो बर्गर लेने जाते हो ना आप, जो बहुत पसंद है सबको, वहां भी स्टेज होता है, क्योंकि वो भी ट्रेन्ड एम्प्लॉय है जिसको इंग्लिश आती है. वहां बोलो, एटलीस्ट इतना सा तो मिलेगा. बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो घड़ा भरेगा. ठीक है. सो एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं फिर अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा कि बेवजह बेमुनासिब बातें करते रहे, बेवजह बेमुनासिब हम सब ही बातें करते रहे, गर्द हमारे चेहरों पर जमी थी पर हम आईनों को धोते रहे. So at last we can sum up that the problem lies, one minute. The problem lies कि आप समस्याओं के पीछे छुपते हैं. समस्याओं के पीछे छुपना बहुत आसान है. और बात अभी शेरो शायरी की चल रही है तो 2 लाइन ऐड करूंगी सर, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से मारो अरे यार. तो बात ये है बेटा कि जो ज्ञानार्जन आप लोगों ने किया है, ये मैं क्लास में भी बोलती हूँ आप लोगों को, कि जो ज्ञानार्जन आपने किया है उसको एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपके अंदर 10 CGPA भी है ना तो वो किसी काम का नहीं है. एक्सप्रेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इज मस्ट. एंड यहाँ से एक चीज और, जो कॉन्फिडेंस को लेकर अभी बात चल रही थी, तो कॉन्फिडेंस को लेकर मेरी खुद की ही एक स्टोरी है कि क्लास 11th-12th I had done from शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय from व्यावरा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट. सो 10th तक हमारे
जो सिटी था, तहसील प्लेस थी, वहाँ पर सिर्फ 10th तक कॉन्वेंट स्कूल होता था और 11th 12th में हमें टीचर हिंदी में पढ़ा रहा होता था और हमें नोट्स इंग्लिश में बनाने होते थे। तब हमने हमारी कम्युनिकेशन स्किल को हिंदी में इम्प्रूव करा। इंग्लिश इम्प्रूव्ड थी लेकिन हिंदी में इम्प्रूव करा। एंड देन माय मदर वाज अ टीचर, शी टोल्ड मी कि बेटा आपको स्पीच बोलनी है, कल 15 अगस्त है। एंड आई वाज शिवरिंग ऑन द स्टेज। दिन रात प्रैक्टिस करी और मैं शिवरिंग हो रही थी मुझे कि कैसे स्पीच को कंप्लीट करूंगी। मैं वहां गई, सारे क्राउड को देख के घबरा गई और बिना बोले नीचे आ गई। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बोला नेक्स्ट बार फिर प्रैक्टिस करना। यही स्टूडेंट्स को भी कहना जरूरी है टीचर्स के द्वारा कि नेक्स्ट बार फिर प्रैक्टिस करना, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। लेकिन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। मेहनत यदि आप करेंगे तो एक दिन जरूर रंग लाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जितनी भी बातें भी यहाँ डिस्कस हुई है, कल जो मेरा सेशन था उसमें भी मैंने उस एक पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया था, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आज आपके इस गैप को, एकेडमिया और इंडस्ट्री के गैप को ब्रिज करने के लिए इंडस्ट्री भी कुछ अटेम्प्ट करेगी, गवर्नमेंट भी करेगी, एकेडमिया भी करेगी। बट जो मेन पॉइंट है कि आज आपको कोई भी घुट्टी चम्मच से नहीं पिला सकता है। यू आर नॉट 6 महीने के बच्चे नहीं हो आप। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में अपने आप को बिल्कुल रमना पड़ेगा। लाइक आपने जो एग्जांपल दिया, मैं कैसे प्रैक्टिकलिटी सीखूं, एज यू सेड कि आप जाओ ना, 2 घंटे जाओ, कोई नहीं रोक रहा। आप इस चीज का वेट ही मत करो कि कोई आपको इंस्ट्रक्ट करे कि गो एंड जस्ट हैव अ लुक इन एनी इंडस्ट्री, एनी शॉप। Self-directed learning is the only tool for success, and success in terms of development day by day. सक्सेस को आप ये मत सोचो कि आप कल बिल्कुल बैंक कर लोगे 10 लाख का पैकेज, 1 CR का पैकेज। आज आप कल से आज बेहतर हो ना, दिस इज सक्सेस फॉर यू। तो प्लीज माइंड इट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या थैंक यू। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बेसिकली आई एम अ लॉ स्टूडेंट। तो सर अगर हम लोग थ्योरेटी मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थ्योरेटिकल नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हम थ्योरी पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम कोर्ट में जाके प्रैक्टिकल क्या करेंगे। सर मैं ऐड करना चाहती थी बात। बिल्कुल, और आप तो जिस प्रोफेशन में, आपको तो हमेशा ही पढ़ना है। यस यस मैम। यस सर, एग्जैक्टली, यस सर। जैसे कि मैम ने बोला कि कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग यू, मी, द इंडस्ट्री पीपल्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन who wants to bring the change. You have to be the change to bring the change into the society. मेरा बहुत ही सिंपल सा जो आपने बोला था और आपने ऐड किया, मेरा सिर्फ सिंपल सा कहना है कि स्कूल कॉलेज में हमें बताया जाता है कि कहाँ बैठना है, कि आपका रोल नंबर है, यहाँ बैठना है। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज से बाहर आ जाओगे ना, आपको बैठने की जगह खुद बनानी पड़ेगी और वहां पे तकलीफ आएगी। तो अनटिल अनलेस हम लोग उसके लिए, क्योंकि छीननी पड़ती है जगह, आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पे तो आपको बताया जाएगा ये रोल नंबर 1 2 3 4 आप इस लाइन में बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही आप गेट पार हुआ, आपको जगह छीननी पड़ेगी। जगह छीनने के लिए 500 लोग और खड़े हैं वो जगह छीनने के लिए। इट्स लाइक इंडियन आइडल, आपका एक सिलेक्शन हो रहा है लेकिन 5000 लोग, 5 लाख लोग उस गाना गा रहे हैं, और क्या कोई भी कमजोर है उसमें से? शायद नहीं। तो किसने ज्यादा मेहनत करी उसके ऊपर फर्क, उससे डिफरेंस क्रिएट हो गया। और लॉ के लिए तो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। अभी रेंटल लॉज में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स। मैं जब फ्रेंचाइज एग्रीमेंट 12 साल पहले जब मैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बनाने के लिए हाई कोर्ट और यहाँ सब गया था, तो कहते फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बनाना है, तो कहते फ्रेंचाइज एग्रीमेंट ये क्या होता है? मैंने कहा मेरा एक ब्रांड होता है, ऐसा ऐसा मैं करता हूँ ये। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट? मैंने कहा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलग होता है, ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर है। मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ। आई मस्ट हैव मेट क्लोज टू 7-8 गुड लॉयर्स, लेकिन दे डिडंट नो कि करना क्या है। अब ये उस टाइम पे तो डिस्कशन भी नहीं था कि इंडस्ट्री एकेडमिया क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, राइट? लेकिन अगर वहां पे कोई स्किल्ड वो होता, वो मुझे अगर x की जगह पे 10x भी चार्ज करता, आई वुड हैव पेड हिम। व्हाई? बिकॉज उसके पास वो स्किल है जो मुझे चाहिए थी। तो एट द एंड ऑफ द डे अपने को सिर्फ ये देखना है कि हु इज गेटिंग द जॉब डन। इफ यू आर गेटिंग द जॉब डन, फैंटास्टिक। इफ यू आर नॉट गेटिंग द जॉब डन, दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप हो या नहीं हो। जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि उगते सूरज को सलाम है, जो आज जिसकी मूवी आ रही है वो टॉप पे है, बाकी कई सारे फैंटास्टिक एक्टर्स। तो फैंटास्टिक एक्टर्स या बेस्ट सेलिंग एक्टर्स, जो दोनों के बीच का फर्क है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। मैं हो सकता है बहुत अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं जो हर बार एग्जांपल देता हूं वो देता हूं कि आप बेस्ट ऑथर हो या बेस्ट सेलिंग ऑथर हो।
हो सकता है कि चेतन भगत से ज्यादा अच्छे लिखने वाले ऑथर जमाने में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बुक्स नहीं बिक रही हैं। लेकिन बेस्ट सेलिंग ऑथर कौन है? चेतन भगत। तो बेस्ट सेलिंग ऑथर और बेस्ट राइटिंग ऑथर में जो फर्क होता है ना, यू हैव टू ओन दैट आल्सो। अपनी कॉलेज कंप्लीट करनी है, 2 साल की जॉब, अच्छी पैकेज हो जाए तो मुझे शादी करनी है। इट गोज ऑन। द प्रॉब्लम इज दैट ब्लाइंड रेस। हम लोगों में से 90% ऐसे होंगे जो बिग बॉस देखते होंगे, 10% ऐसे होते होंगे जिनको मालूम होगा हार्वी स्पेक्टर कौन है, राइट? तो इट्स अबाउट द रेस। अगर मुझे मेरे पापा ने 11th क्लास में कोचिंग जाने की बजाय ये बोला होता कि शॉप पे जाओ अकाउंट संभालो, जो कि उन्होंने नहीं, मेरा किया। ये कहना है कि दोनों क्यों नहीं पता हो, बिग बॉस और हार्वी दोनों ही पता होने चाहिए ना। Exactly, हम लोग exactly. इफ और में क्यों बात कर रहे हैं, एंड में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली द ब्लाइंड रेस की सब नहीं, वैसा रेस कर अच्छी रहे है, हैं, सब रेस इज वैसा गुड। कर रहे हैं, सब वैसा कर रहे हैं, मुझे भी वही करना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे रेस अच्छी बात है। मुझे बीबीए में एडमिशन लेना है, मुझे फिर एमबीए करना है और मुझे फिर जॉब करना है। बट मैंने दोनों किया, बीबीए किया, एमबीए किया, बिग बॉस भी देखता हूँ, हार्वी स्पेक्टर भी मालूम है, ठीक है। बट क्लास 11 से मालूम है कि अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है, ना कि कॉलेज में आके बीबीए में पढ़ा व्हाट इज अकाउंट्स, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी रेस है, सब अपनी अपनी स्पीड से दौड़ रहे हैं। आप दौड़ना चाहते हो दौड़ो, नहीं दौड़ना चाहता मत दौड़ो, कोई भी आपको जज ही नहीं कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप फर्स्ट आना चाहते हो तो जॉगिंग छोड़ दो, रनिंग स्टार्ट कर दो, स्प्रिंटिंग स्टार्ट कर दो, बस ये फर्क है। द प्रॉब्लम इज कि जब मैं कॉलेज में एमबीए में था, एवरीवन वाज रशिंग फॉर डिलॉयट एंड सिमिलर कंपनीज, ठीक है। बट हमारी टीचर्स हमें क्या कहती थी? डोंट पुश फॉर जॉब, ठीक है, जो मिले ले लेना, जहां तुम्हें मन लगे वो जॉब करना। अमेजोन ने फॉर इंग्लिश रिजेक्ट कर दिया, एसएनपी ग्लोबल ले गई, 3 बार प्रमोशन भी दिया, ठीक है। तो वो ब्लाइंड रेस है कि हमें गुड पैकेज है, इसी पे जाना है। यहीं अगर क्लास 11th में ये मालूम है कि मुझे बचपन से 5 साल मेरे पास है अभी जॉब लेने के लिए, 5 साल अगर मैं फ्री में भी किसी के लिए काम करता हूँ तो मुझे मालूम है मुझे उस इंटरव्यू में क्या बात करनी है। I believe मेरी it's a इंग्लिश कोई भी नहीं perception. देखेगा। I believe it's a perception that you are taking it as a blind race. Actually, it is not a blind race. Everyone is trying to make his or her own space on this planet. बीबीए लेने से पहले बच्चों को मालूम नहीं होता कि बीबीए लिया क्यों है, तो वो तो बच्चों को पता होना चाहिए ना कि वो बीबी क्यों ले रहे हैं। और उनको और वो कौन सी क्लास में एक्सपोजर और तो नेट पे नहीं जमाने पता का है, अवेलेबल लेना चाहिए। उन्हें कौन सी क्लास में पता होता है कि उन्हें बीबीए का मतलब क्या है, फुल फॉर्म सबको मालूम होता है। बट जाए अभी आपने जैसे हमसे सवाल किया, राइट। वन क्वेश्चन, आपको आपके मम्मी पापा को शायद मोबाइल चलाते उतने एफिशिएंटली नहीं आता रहा होगा, जब स्कूल में आपको मोबाइल चलाना एफिशिएंटली आ गया होगा, लैपटॉप चलाना आ गया होगा, करेक्ट? यहाँ पे तो फिर आप ये ब्लेम अपने पेरेंट्स को कैसे दे सकते हो कि पापा ने अगर 11th में बताया होता कि मैं अकाउंट्स जाके देख लूं तो शायद मैं 5 साल में प्रिपेयर हो गया होता। नहीं, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए पेरेंट्स बोलते हैं, पर पेरेंट्स कम बोलती है, पर पेरेंट्स एग्जैक्टली बोलते हैं बट कि हर वो उसके आए चीज थे 90, बट हर वो चीज हम पेरेंट्स की मानते हैं नहीं, हम वो चीज पेरेंट्स की मानते हैं जिसके पीछे हम छिप सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आप जो बात बोल रहे हो आई एग्री, इतने में पैकेज हो जाए, ये हो जाए, मेरे ख्याल से यहाँ जो भी बैठे हैं ना सब उसी लाइन में बढ़े हैं, बट कुछ कहीं डाइवर्जन लिया। मैं इंडस्ट्री में 5 साल वेल सेटल जॉब में विद मैरिड लाइफ मुंबई में सेटल थी, बट देन आई फाउंड कि यार कुछ स्टिंग मिसिंग है लाइफ में, लेट्स स्टार्ट सम बिजनेस। मैं इंदौर वापस लौटी और काम चालू किया। कंफर्ट लाइफ को छोड़ना, नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना और अपनी कमियों को किसी और को ब्लेम नहीं करना, वो आर्ट अगर आपने सीख लिया ना तो सब कुछ आप कर लोगे। कन्वे नहीं कर पाया। हाँ। द ब्लाइंड रेस इज नॉट द डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन। मेरा मतलब ये है कि मैं वो स्क्रीनशॉट्स देखता हूँ कि माय किड गॉट 90%, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे देखता हूँ, मैंने कभी कोई स्टेटस ही नहीं देखा कि इसको 60% है, पर आर्ट में फर्स्ट आया, मैंने किसी का स्क्रीनशॉट नहीं आया।
शादी कर लूंगा फिर स्टेटस डाल दूंगा। एग्जैक्टली exactly. तो ये सोसाइटल ब्लाइंड रेस जो है, अगर But हम you उसकी can डेफिनेशन start चेंज changing कर this society. It is not You a can be a initiate. it is a stereotype. It is not a blind race. Mindset में change होना जरूरी है. Let you be the one person who can bring the change into the society. Start from you. आई विल Like Start from you. a small example, बहुत छोटा, शायद उतना रिलेवेंट भी नहीं होगा, पर आपके पॉइंट में मेरे 2 बच्चे हैं 3.5 साल के, ट्विंस हैं। आज वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, टीचर इज लाइक कि आप इनके सबमिशन नहीं देखते हो, इसकी मोटर स्किल नहीं जा रही, आड़ा थड़ा कलर हो रहा है, एंड वी डिसाइडेड कि हम वो पेरेंट बनेंगे जो बच्चे को गाइड नहीं करेंगे। लेट देम डू व्हाट दे वांट। आज 3 महीने हो गए, वो अभी भी कलर बाहर ही निकाल रहे हैं और बाकी बच्चे बिल्कुल बाउंड्री बना रहे हैं, बट वी बिलीव कि उनकी कैपेबिलिटी उनको समझने दो, उनको मौका तो दो, वो उभरे। तो जस्ट स्टार्ट मेकिंग द चेंज ना। आपको खुद डर लग रहा है एक्चुअली वो चेंज बनने में, वो डर हटाओ, देन स्टार्ट लुकिंग कि धीरे धीरे सब बदलेंगे। मेरे साथ हो सकता है दूसरे पेरेंट्स भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मैं उनको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं बोलती, एक प्रेयर नहीं बुलवाती, कुछ भी रिसाइट नहीं करवाती हूँ, बट नाउ आई फाइंड कि वो कुछ टोन तो बोल रहे हैं, टे 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 टे। बाकी लोग रटवा रहे हैं, बट आई एम नॉट। Okay, I think we are running late. So with that, I think we come to the end of the session. And I would like to thank all the panel members and the audience present here for this insightful, discussions. Maybe I'm sure you'll be having a lot of doubts. We may discuss them shortly. We'll be having for lunch, so you can discuss there. Okay. So with that, I thank all the panel members for this insightful discussion. We had extended discussions. So once again, thanks. I hand over the things to the organizers. Yeah. Fine, thanks. So I request all to have lunch. It's served. You have got the coupons, I believe. In case if you have not got, just get it from Mr. Ganesh.
Hello. Check, check.
अच्छा अच्छा अच्छा। अभी 1 ईयर का कितना बताया आपने? ₹34,000 117। क्या फर्क है दोनों में? ठीक है ठीक है। ये टाटा का है ना? ठीक है, ये बात करें। हो रहे सर। तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मुझे इस नंबर पर करेंगे, एक मिनट मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसी पे ये जज्बी नाम है।
Hi, I'm Sujit Kaur from TCS. Am I audible? Hello, hello. Can you hear me, Sujit ji? Yeah, hi, Dr. Abhishek. Yes, I can. Hi, so you're welcome. Actually, the lunch is going on, so Sure, sure, no problem. it will take 5-10 minutes. No problem. I'll stay connected. I'll be on mute. Okay, okay. And welcome, Shri Bhandari ji. I can see that you are here.
Thank you, sir. So we'll start in another 5-10 minutes.
Good afternoon, all. So we have with us Mr. Sujit Guha, who heads the Academic Co-Innovation Network at TCS Research and Innovation as a keynote speaker. He has been with TCS for over 25 years and has worked in multiple roles, including service delivery, relationship management in different regions and countries, including USA, Australia, Europe. He has been instrumental in fostering the culture of innovation in TCS. So prior to joining TCS, Sujit worked at Central Mining Planning and Design Institute and started his career at Hindustan Motors. And he holds a BTech degree in mechanical engineering from BIT Mesra. So, sir, I welcome you from MPVS team and ISU conference team. So, sir. Thank you. Sir, your voice is not clear or not audible also. Just is it better now? Yes, sir. Better now. Okay. So thank you. Thank you for introducing me, and thank you for the opportunity to speak to you all. Am I audible clearly? Yes, sir. You're audible now. Okay, thank you. So we are gathered today, though a few of us remotely, to discuss on the industry, academia, and career opportunity as part of the Science and Technology event, which is Madhya Pradesh Vigyan Sammelan and Expo, where the theme of the event is collaborative ecosystem of traditional and modern science for Viksit Pradesh towards an Atmanirbhar Desh. So when we talk of Atmanirbhar Desh, I think two of the early great leaders that comes to my mind is that in early 1893, Sri Jamshedji Tata and Swami Vivekananda, they had met on a ship while traveling from Japan to America and was inspired. And that meeting basically inspired Sri Tata to set up the Indian Institute of Science at Bangalore in 1909 as a research institute. So you can say, and he was also a pioneer of the industry, right? He started the cotton mills and then the Tata Tisco, basically Tata Steel, what is now Tata Steel. So the industry academia collaboration basically started right at with Sri Jamshedji Tata, right? And so they envisioned Atmanirbharta by building the industry, by building talent, by building technology. And it fills me with immense pride to be part of this Tata group, which was started by Sri Jamshedji Tata and gives us an opportunity to contribute towards an Atmanirbhar Desh. And Swami Vivekananda's teachings, they continue to inspire us for developing ourselves as better humans. I'm so thankful to the current leadership of this great nation, be it political leaders, the industry, business leaders, social leaders, that have led people to focus on the Atmanirbharta or self-dependence. And that can be enabled by building up a collaborative ecosystem. So the key word today is collaboration. And that will be the theme of my talk today. For the next 30 minutes or so, I'll talk on the roles of academia and industry. That is, I'll speak on how collaboration has happened, how collaboration happens. I'll illustrate with examples of how we from TCS has engaged with academia. I'll talk on talent development and typically how it has happened till now and what will it be going forward. I mean, if we talk of COVID, then COVID has basically redefined BC to, we used to say 27 BC or 25 BC. So BC meant before Christ. Now it is before COVID. So, right. So there was a type of
people used to work in a certain way or behave in a certain way before COVID, and things will have changed and definitely will change going forward after going forward. Right. So, I'll talk on the various talent development ways and methods, and how industry and academia can collaborate in working towards it. I'll talk on challenges, some of the how we can align the objectives of the industry and academia for a better collaboration. What can be the frameworks of engagement? What are the roles and responsibilities? So I'll talk on that, and then finally I'll also. And our government is definitely providing us the necessary platforms. So how probably we can help the government to have a better, to enable us to better have a better collaboration. So for a brighter and sustainable future, both industry and academia are driven by the need for innovation, right? So innovation is the topmost agenda of almost every company now. And both the industry and academia play a very significant role in the innovation value chain. I mean, if both has to exist together or work together for the innovation, right? So when we talk of innovation, there is two parts to it. One is an invention, which is the novelty or which provides a competitive edge, right? Or the competitive advantage. And there's the other part which is finally the implementation part of it, or the monetization, which makes the business impact or the social impact or the environmental impact. I mean, the impact which the innovation is supposed to do. So if you look at what are the market demands or market trends are, I mean, from a consumer point of view, I mean, that consumers drive the business, right? So, I mean, consumers, when they have their needs fulfilled by the businesses, and so the consumers are basically nowadays looking for an experience, right? They're looking for experience, for personalization. So whatever service or products that we are expecting it to be personalized to our likings. And the industry is also trying to meet those needs of personalization, providing an experience through the various technologies, right? The other key thing that is driving the businesses is the sustainability. So there are sustainable development goals. Those the countries have agreed to work towards the sustainable development goals. So those have to be achieved. So they are a big problem to solve. So basically, consumer behavior or the consumer needs and the sustainability are the two main driving factors. And the digital technologies, right, and led by, say, artificial intelligence, is gradually turning into the backbone of the companies. It is right from right from the front desk to the back office. Like we are, recently we had even robots in Japan who are at the front desk of a bank. And obviously, of course, the back office is now totally driven by robotic process automations. So, the artificial intelligence and all the digital technologies together are enabling that. And as a sustainable business model, what is emerging is a ecosystem business model. When we say ecosystem business model, meaning there is a network of businesses, you can say, which work together. You can think of it as this way: say you are traveling by a train. I mean, of course, I am from Kolkata, so I frequently see this, that when I travel on a train, say there is a hawker who is selling, say, samosas. Okay, so once the samosa hawker he completes his selling, immediately the chai wala will come up. So there will be a demand for the chai. So, but it's not that the same person, that the hawker who is selling samosas will also sell chai. So they are two independent persons, two independent businesses, but they have aligned their business methodologies in such way that their demands, I mean, they are able to meet the consumer demands.
So that's ecosystem business model, and this all the big companies are now working towards of setting up this kind of an ecosystem business model, and technology only will drive it. So the primary role of industry, if I see, is in the implementation of the monetization of the innovation, and to make an impact as intended by the innovation. The primary role of the academic research is for creativity, for originality, and thought leadership. So, I mean, and there's a collective body of knowledge across both industry and academia. For example, market knowledge is with the industry, while the academic knowledge is with the academia. And the academia is, I mean, the industry is for action. I mean, they don't have time to think. They are driven by numbers. They have to bring the money. They have to produce, I mean, generate enough businesses so that they can get revenue. Now, they don't have the time to think, right? So the thought leadership is provided by the academia, which is the job. The job is to think and to come up with creative and original ideas. So a mantra to a successful industry academia relationship lies in steering the collaborations towards a shared objective, and that results in a better outcomes and therefore greater futures. Okay. So I mean, there are various engagement models which I'll probably describe a few. So if you look at it from I mean, from a talent development perspective, a company like TCS, which is largely manpower driven, meaning or human intellect driven. I mean, as part of our assets, our manpower or our associates are the main asset. That asset is provided by the academia. Right? So academia is kind of a supplier to the value chain that of the TCS's business. I mean, so in terms of talent development, so TCS has a significant way of influencing the academia to get their required talent from the academy. Other part is the I mean, to create products and services, like to have innovation. So we want to have I mean, industry typically want to have create value, right? They want to create IP assets, which include new technologies, early prototyping, I mean, and have a minimum viable product based on which prototyping is done, and then it's piloted, tested, and then finally it's put out in the market. I mean, as a TCS as a business model, we generally provide services to the customers worldwide. So as part of that, providing the services, we also I mean, we help our customers in their innovation. So we engage with the customers to find out their problem statements, and since we also are engaged with our academia to help the customer, I mean, kind of create a bridge between the academia and our customers to help the customers find solutions to their problem statements. I'll come into that also, that how we are helping our customers, what kind of collaboration we are enabling with the academia for this. And there is also, like I mentioned, about the ecosystem business model, right? So there's an ecosystem strengthening or policy network that we are part of. So we are members in large consortiums. Now the consortium is basically a group of companies and academia coming together to solve a common problem. So they are called consortiums or even clusters for driving knowledge. They drive the research. There's standardization that is happening, right? So like say 5G, for implementation of 5G, the standardization has to be done. And that has to be done for every country, and then across the world. So those need a collaboration across the industry, across government bodies, across academia.
So, so there's a whole, I mean, ecosystem that is working out. So, if I'll just look at the from a TCS point of view, the way we are connecting with the institute is like currently we have around 200 plus institutes globally which we have connected to. They are called part of the TCS co-innovation academic co-innovation network. Okay, and of the 200 plus at any point of time, we are actively connected to around 50 plus of active academic institutions, and we have a partnership with variety of institutes. So we have the bulk of the partnership is with technology institutes like IITs in India, and all the premier institutes, IITs and IITs, even the private institutes like BIT and SRM. So all the premier institutes in India are partners in TCS. Across the globe also, we are almost on the top 25 of the, I mean, you can say the 25% of the top 25 are TCS partners. Like say, we are partnered with Cornell Tech, Carnegie Mellon, University of Toronto, University of British Columbia. So, I mean, University of Tokyo. So across the world, across various geographies, we are partnered with. And as I said, that it's with a variety of institutes, meaning technology institutes, though forming the bulk. We are also connected with management schools, like most of the IIM in India, Great Lakes, then SC Johnson School in US, then Singapore Management University. Then we are also connected with some of the design schools like Royal College of Art in UK. So the design schools, they in fact have, I mean, provide a very important collaboration of providing us the necessary design because the consumer experience is now of prime importance, right? So to enable to have that, to enable that particular design, to enable that particular experience, the design is of utmost importance. Then we are also connected with law schools. So like we are partnered with the National Law School in Bangalore. So now you might be wondering, why is law so important? Because now when artificial intelligence will drive the autonomous vehicle, then we have to figure out what is the law around it. Because the law, as of now, the law around privacy is well defined, though the technology is yet to catch up as to how do we ensure privacy. Whereas on the other hand, technologies like say AI driving an autonomous vehicle, the laws around that are not, though the technology is ahead, but the laws around it are not defined. So, so that's the, I mean, so those two have to go hand in hand. The law has to be defined along with the technology. Then there's the medical institutes that also we are connected with. So there's a lot of analysis that we do with the data that we get out of the medical schools, patient data, and we work with them to come up with the outcomes. So we have worked with various medical institutes to come up with solutions on cancer, we are trying to define a digital twin of the human body also. We have come up with an artificial skin to enable better, it will help the cosmetic industry so that it is not done, testing is not done on the animals. Okay. So, if you look at the various kind of engagement models that we have, one is research, right? We do sponsored research. We are into collaborative research. Collaborative research
and sponsored research differ in the sense when we say sponsored research, it's we are just paying the institute a sum of money, and the institute does the entire work of the research. So TCS is not at all involved in it. It's only that how we that when there is an outcome IP, we leverage on that outcome IP. Whereas in case of a collaborative research, it's both sides, the TCS and the industry and the academia, they put in their effort together. They both bring in their background IPs, and there is whatever the outcome IP is generated, there is a particular agreement on it as to how it will be dealt with. Then we also participate in consortiums, like I mentioned about that. Like there is a cybersecurity consortium in Australia, which is a combination of 8 Australian universities and around 12 industries who work on some very common problems. Cybersecurity is a problem which is very domain agnostic, right? It has to be across domain, across any company. Cybersecurity is applicable. So, so all these, I mean, consortium members, they come together, put in their effort, and they collaborate to find out solutions. We also participate in competitions, with the academia. So, like we had collaborated with IIT Kanpur in the Amazon Picking Challenge, and then also with IIS, Indian Institute of Science, for a drone challenge in Dubai. One of the main things that we look towards the academia is the talent, right? So talent in terms of faculty. So they are the experts. So faculty engagement forms the bulk of our engagement. So there's the research advisories. They are more or less as consultants who provide us the necessary advice to do our research work. Then we engage students. I mean, students are heavily engaged. We do have internships at all levels: undergraduate, postgraduate, PhD, and we have recently found quite a bit of success in the student capstone projects. So mainly it was started off with our overseas academic collaborators, like say with Carnegie Mellon. We have done the students there. We for their project works, we provide them a list of problem statements. They get to pick and choose their problems, and they work on it as their project in curricula or other within course of project work. And they whatever the IP is, whatever the outcome IP is, the results, they share it with us. So we have found a very good response to that, and we have also piloted this within India, and we intend to expand this to more and more institutes. So currently it's being piloted in a few institutes, in some of the few premier institutes, but shortly we will be taking this to larger institutes. And that's also what the national education policy is also recommending, right? A more industry linkage to the course curriculum. And even the NEP is suggesting for the 4th year of a BTech degree to be dedicated towards research. So I think that is what you can say will be. I mean, this kind of engagements will be far more than what it is today. We do have joint labs with quite a few institutes, and that is mainly to leverage the infrastructure that many of the academic institutions have. And they do have some of the world-class, of the best lab infrastructure. And so we get together with the academic institutions, to leverage the infrastructure. Then we have data sharing arrangement, like we said about with the medical institutes, especially. So they share the data on the like on COVID also. There was various data that was shared, and
They are analyzed using our analytic techniques, and then the analysis results are then further processed to have an outcome or a solution. We have also done some platform development, like we might be knowing that digital twin is something which most of the companies are doing nowadays. That is, they're converting the processes, say a factory process that is entirely digitized, and it so that you can do a simulation of the process. So similarly, nowadays even you might have heard about integrated computational material engineering. So you basically have the properties or every particular atom and molecule digitized, and then those are then analyzed, or you can come up with computing, you can come up with newer materials. Or I mean, even that was how even the COVID, during the COVID, the various drugs or the inputs to the vaccine, uh, I mean, they were accelerated by usage of the ICME. So we have set up I mean, TCS also has a ICME product called Premap, and that we have set up a national hub for the companies and for students to use it at it has been set up at IIT Kanpur. So that's the hub for the ICME. And IIT Kanpur is also starting up a course, MTech level course on ICME for further dissemination of such knowledge. As far as talent development is concerned, we also participate. I mean, we sponsor PhDs, right? I mean, when we say sponsor, meaning we sponsor PhDs who are, I mean, the institutes, they recommend to us as to who can be eligible for sponsorship. And we have a research scholar program where the students get a stipend and for 4 years, and they also get travel grants for the national and international conferences. Even the guides also get a travel grant along with that. They also get a contingency amount, and the most important thing is they get a mentorship from TCS. So there's a mentor who is assigned from TCS who will guide the PhD scholar in the entire, I mean, in their journey of PhD. There are also some events which are done, which are held every month, which is called the virtual research cafe. So all the research scholars, they connect over on the first day of the month, and they are asked to. I mean, some of them present on their PhD thesis, and there's a panel from TCS who provides feedback as to what can be the way forward, or what might be improved. Okay. I mean, I would say that I mean, with the advent of COVID, collaboration became super easy. I mean, suddenly, I mean, previously it was a remote meeting, or meetings like this was something which people were not very much accepting, right? And post-COVID, this kind of collaboration, it just um, became very easy. Availability of people also increased because people were bound to their home. So there were no, I mean, previously to set up a meeting, many of them would say that I'm traveling on such and such day, so not available. So it was a nightmare to have, ensure availability of everyone. But since there's no travel involved, or less travel involved, so availability has increased dramatically. So arranging and conducting meetings are now very easy. So that way, I mean, the collaboration with our academic partners has also smoothened much more than what it was before COVID. So I mean, in terms of talent development, I mean,
we have all seen that Indians educated in India are now heading global companies, right? So of course, most of them are the best brains from the IITs, and I mean they have been selected through a rigorous process, and they have been trained also through a rigorous process. But however, if you look at say IT, where India is dominating globally, it's not just the IITs and the NITs and the premier institutes. I mean, people from across colleges, right? They are working in IT, and they have really made a mark or an impact on the global IT. So Indian education, I mean, the way we have been developing people, I think that's validation or a validation that yeah, indeed we have developed good people. Indians do are good, have a scientific temperament. They can work very well in the science environment or the technology environment. So two things which you know kind of have uh, put in or you can say has changed the way we are going to see talent development or education going forward. Right? One is COVID, which has accelerated the online education. Uh, Distance education has been there for a long time, but it was kind of, I mean, the corporates are finding it difficult to accept it. I mean, accept talent who are coming out of, say, IGNIO or any other distance education programs, right? So, but now that is going to be what it is. Now with even the main I mean, the main universities, they only starting off with remote degree courses, and those are very well getting accepted across the globe. So the way education will be delivered, I think that is where that will totally change. I mean, it will probably be less of in-person education, like the way people are educated, have been educated till now, that is going to colleges and going into campuses. It will probably more be towards, you can say, a democratization of education is happening. The other part is the national education policy. I think that has really made many things. I mean, it will trigger off a lot of changes. So it has kind of it has kind of say the credit point system, right? The credit system. So you can complete your degree over a period of time. What what we see in the West is what is called micro credentials. That is, you take up very small courses over a period of time, and those those credits, when it adds up, you finally get you are finally recognized as you get a degree or something, or certificate around. So there's NPTEL and the SWAM courses. I'm sure most of you might be aware of this. So I think they are making a significant contribution to the education and talent development. And industry is playing a significant role in this one is on the delivery part of it, and the other is on the content development also. Like if I look at it, the other day I think I saw Google is making the courses on cloud computing for NPTEL. Like TCS is also hosting many of the NPTEL courses on their platforms, which is the TCS Iron. TCS Iron is also hosting, I mean, IIT Madras, they had started on their BSc Data Science course. So it's, I mean, it's a shift from the way normally the IITs operate. That is, the input is not filtered. Where I mean, it is open to, the course is open to everyone. Whereas as you progress ahead, you are assessed, and that is where the filtration happens. I mean, if you are able to complete till the end, then only you get a degree in data science. But I think that's a great way of, I mean, instead of filtering the input, you are offering the course to everyone, and it's upon the capability of the individual to complete the course.
And so, so these kind of data models, education models, can only be possible only if it is done over online or over platform digitally, delivered digitally. So basically, the industry is helping the academia for such talent development. One is to set up platforms, systems, then setting up, say, assessment services. Like TCS Ion, Ion is a brand. So what we have done is we have entire assessment services where all the even the JEE mains are done on the Ion platform, the CAT, all the major recruitment exams like SBI and railways. So all those are now done over the assessment platform through TCS Ion. So there's a number of things. So the question papers are very secure. I mean, there's very less likelihood of the question papers getting leaked because it's all driven centrally. I mean, it's all from over the coming over the net. So there's no question of papers getting printed or getting leaked. Then the assessments are also done digitally, even for questions which are of where there is a writing involved. So those assessments are also, there's a arrangement which has been done for assessing those kind of descriptive answers also. Then there are various learning programs which TCS is doing, and I mean through the Ion platform. So the learning programs, meaning like what today say I mean, we are supporting many of the universities, then as well as we have our own learning platform where we have collaborated with the university to ultimately provide a certificate course which is backed by the university also. One of the things that I think this collaboration has enabled. So national education policy has now given an opportunity for the Indian universities to set up campuses abroad, right, to expand globally. And that is where I think companies like TCS can help a lot. So helping the universities to globalize. I think that is one of the things that TCS can definitely help, given the global nature of our business. And we can definitely help in the modernization of the university. The universities themselves have to, kind of transform. So they have to be, I mean, make themselves digital, make themselves. There has to be transformation in the way the courses are also delivered, right? So in that entire journey, I think that is where TCS can definitely help. So, I mean, my intent of having this of this talk was to highlight on the various collaboration aspects, and I think that is what if I don't know whether how you have received it, but we see a great prospect in. I mean, collaboration is the way forward, and without collaboration, things will not move. That is how we would like to say. So that's all from me. Thank you. If there are any questions, then probably we can take it up. Thank you, Sujit ji. Thank you. Thank you very much for your wonderful lecture, and I hope a lot of us will be benefited by such a nice lecture. Now I'll call Dr. Burana to present the mementos of our panelists. So Dr. Burana, please.
Dr. Shahina Qureshi. Mr. Sachin Chalisgaonkar. Now I'll call Shri Praveen Dingraji to present the mementos to Ms. Soumya Upadhyay. Mr. Shivam Dubey. Dr. Farida. Thank you, sir. And I also I'll post the mementos for Sujit ji and online जुड़े हुए Dr. Bhandari. So now I'll welcome to Shri Praveen Dhingra ji for the valedictory note of this conference. Thank you, Dr. Rajput. Industries, academia and career opportunities के सेशन में हमने 2 दिन बहुत ही अच्छे डिस्कशन किए। हमारे इस सेशन के सत्र का शुभारंभ माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी द्वारा कल किया गया। हमारे जो उद्घाटन सत्र था उसमें श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी माननीय मंत्री, श्री सचिन चतुर्वेदी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर श्री दीपक फाटक जी जो इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, और श्री नीलेश जैन साहब जो डायरेक्टर हैं आईआईटी इंदौर के, उनके द्वारा ज्ञानवर्धक जानकारियां दी गई और इस सत्र का शुभारंभ किया गया। कल हमने 2 कीनोट एड्रेस सुने और 6 प्रेजेंटेशंस जो रिसर्च पेपर हैं उनके हुए यहाँ पर, और सेकंड डे हमने 2 कीनोट एड्रेस सुने और एक पैनल डिस्कशन हमारा हुआ जिसमें इंडस्ट्रीज से और फैकल्टीज़ के लोगों ने काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस किए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी सारगर्भित जानकारियाँ प्रस्तुत की। तो इस सत्र के हमारे जो मुख्य आयोजक हैं डॉक्टर अभिषेक राजपूत जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा सत्र का आयोजन किया और सभी फैकल्टीज़ और सबका सहयोग रहा, सभी का धन्यवाद। इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हुए तो कल हमारा वैलिडिक्टरी फंक्शन, इसका फाइनल फंक्शन है, उसमें भी आप लोग सब आए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। श्रीमती संध्या दिघरा भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करूंगा इस सत्र में।